ऑलराइट। तो भाई आज का प्रोग्राम जो है उसमें हम लोग raster and vector data models, different data sources for our GIS. We'll look at that, some of the websites and sources to download the data. Then we'll try to create some vector data in ArcGIS. Then I plan to show how, if a data already exists, for example, let's say the locations of cities. So we'll try to import that data into ArcGIS and basically create kind of a map for all the cities, right? And then we'll see some symbology how um, we create different types of maps or represent data in various ways. And then you in your syllabus you have reprojection as well. So we'll see what reprojection is and why do we need it and how to do it in ArcGIS. So I'll start with the data models, and I hope you can see my screen. If somebody can confirm. Yes. All right. So let's take a time. So what can you tell me about vector and raster? कुछ पिछली क्लास से कुछ याद हो अगर आप लोगों को? Sorry. और अगर Unclear. हेलो I can't hear you. So anyway, so there are basically there are two types of data models in your GIS. One is vector, and another is your raster. And uh, the first question before, so the point of different types of data models in GIS has to do with the type of features or information that we have in our real world. For example, last time I showed you guys Google Maps, and I told you that Google Maps is basically a vector-based data is stored or displayed on Google Maps. So if you notice something, the type of information that is being displayed or the real world features that is being displayed on Google Maps, what kind of information is it? So you would find roads, buildings, waterways maybe, right? Oh sorry, river bodies, water bodies. You will find some vegetation. All these features are, if we want to classify as discrete. So discrete basically means that they exist in some places and do not exist in other places. So for example, a building exists somewhere, specifically somewhere, and does not exist everywhere, right? And let's take an example of, let's say, land surface temperature, for example, or air, let's say. So air exists everywhere, right? And then let's say temperature. So every place has some temperature. So basically we have these two broad classifications for the different types of data that we have to store in our digital systems. So to do that, we have developed two different types of data models to store two different types of basically features, you could say, or objects inside the digital world. So the vector data model uses coordinate geometry. So for example, you would have seen, if I create a graph, so this is the x-axis, this is the y-axis, and this is the Cartesian plane. So basically two dimensional plane, it has x direction and y direction, and you can move along this. So in the vector data model, what we basically have, we have to store data, we use points. So this is my point. Then we have a line. So a line is constructed by connecting two points. Okay. Then we have polygons. So a triangle is a polygon, a square is a polygon as well, of course. So polygon will have, if you notice, this has
let's say 1 point. Okay, this has to create a line, we needed 2 points, and we connected basically the 2 points to create a line. And to create a polygon, we have, for example, here 3 points, and if you notice, the polygon is made up of lines, and the lines are made up of points. So basically, the basic structure or the basic unit for a vector or a vector based model is a point. So and then you, from the points, you build lines, and from the lines you build polygons. And in fact, you can go to another step and you can represent 3D structures as well using the vector model. So for example, let's say I want to create a structure of the building. So for example, what I might need is, I might need multiple points, right? I will join these points, and we have basically a building. We have a building, obviously ये बहुत अच्छा representation नहीं है building का, right? So for example, if we want to create a building, and so basically we will use multiple points, and in fact we have used, in this case, we have used the polygons as well. So we have used multiple polygons. One polygon is this one, right? Another polygon is this one, rectangular and squarish polygons to construct a building. So the question is, how do we store information so that we are able to build a point or lines or polygons? And the whole idea is to store information from the real world inside the digital our computers basically, or the digital world. So what we do is we basically have a reference. Let's say we have a graph. So this graph has a certain limit, and we have a paper or something, or let's say a 3D space. This is a 2D space. We can also have a 3D space, right? And in this 2D space, we will have some location. So for example, we can have 1, 2, 3, 4, 5, and then on the y-axis as well, we can have multiple locations. And if for example I'm taking only integers, you can take decimals as well. In between 0 and 1 there will be infinite points as well. So to simplify, we are only taking, let's say, integers. Now let's say I have a point here, right, and then I have a point here. Now if you see clearly, you might now be able to or by joining these points you may be able to build a line. So when we want to store let's say a road, right, from the earth surface. So this is earth. Oh man, where is the eraser? This is not earth. So in fact I'll take 2D plane. Okay, so let's say this is an area, okay, and the road goes something like this. Now if you want to store this road, how will you store it? So imagine this whole area to be a graph, and now each location, each point on this map or paper will have a coordinate. For example, if this is 0 and this is a certain number, right, let's say this is n, this is m, and in between there are various points. So now if I want to locate this position, I can construct a line from here and from here, and I can locate this point, and I can locate this point, I can locate this point, and for the whole line I can have multiple points represent, and when I connect them we will have a line. So this is how basically your vector models work, and the type of information that you will be storing using vector models will be, let's say, your roads, rivers, buildings, these kind of information, which basically are discrete, which do not exist in all places. And we will see why we don't use a certain model for a certain type of information. So for example, let's say I want to store
let's say the land surface temperature. So what do you think is the problem if I want to store land surface temperature using the vector model? The temperature is an attribute data, and like space is a spatial data. So space temperature को combine. No, but for example, I can also have a point, right? And with a point, I can have that attribute of temperature. So for that point, I can represent the temperature. So it's not, the problem is not this, that we cannot store temperature with the vector data model, within the vector data model. The problem is that we will need so many points, in fact, let's say infinite points to represent the land surface temperature. Because if I say I move 10 centimeters in forward, backward, right, left, wherever, right, I will need another point to represent the temperature. So the problem is that the temperature is a continuous phenomenon. So all across the surface of the earth, we have certain temperature, some temperature, right? So even if I move an inch, I will need a new point, let's say, to represent the temperature, or I will need a new line to represent the temperature. So in case of, let's say, contour lines you have seen, or ISO lines, right? ISO lines you've seen. So on the ISO lines, if I use isotherms, I think is used for connecting points on the earth surface with equal temperature, right? So I can, yes, I can represent the temperature using the vector model, but then a lot of data is also lost in the process. Okay, and it is not the best way to store information, because then if you have, let's say, 1 billion points, that puts a lot of load on your computer system, because then you have to whenever you want to see the data or you want to perform some operation, you will be looking at billions of points which you need to process. So this becomes a bit tricky, right? And in fact, you will miss some point on the surface as well. So in that case, we use a raster model. So in the raster model, as I showed you guys earlier, let's say this is an image. So this image has something, let's say a water body, and it will have some buildings as well, right? Some trees. Supposing that it's a city or a village or some place, it will have different types of features. Now, this is an image which, let's say, an RGB image. So for example, you can see what feature is there, and the way you see, for example, the color of the water body is blue to your eyes, so it is also blue in the image as well. Now what I want to do here is I want to store, let's say, land surface temperature. Okay, so I can use a thermal sensor, right, to collect information from the surface. Now using the, give me a minute, I need to do something. Okay, all right, better. So to store the land surface temperature, what I will use is a grid based structure. So in the grid based structure, what we do is we basically, let's say, a whole image is partitioned, and in the vector model what we saw is the basic unit was a point. In the case of a raster data model, we have pixels. So this, Pixels. right, so this portion we'll say is a single pixel which represents some information about the surface. So in our case, let's say we are talking about LST, land surface temperature. So in this case, each pixel will represent or store a certain temperature, right? In this case, you will see that none of the space on the surface of the earth is missing. So let's say if this image has a 10 by 10 meter resolution, okay, then this pixel will represent 10 by 10 meter area of the earth surface, and then the adjacent pixel will represent another 10 by 10 meter area of the earth surface, and both these
pixels are adjacent to each other and they are connected. So none of the points on the Earth's surface are missing, even though the data will be aggregated in this case. For example, the information from 10 by 10 meter area will be shown by a single pixel, and if we uh, increase the spatial resolution, let's say decrease the size of the pixel, right? So if a pixel is this much, then supposing that we have a 5 meter resolution sensor, or 1 meter resolution sensor, or 0.1 meter resolution sensor in fact. So in those cases, we will have multiple uh, much more data from the surface. But in all cases, whether we use a coarser spatial resolution or a very fine spatial resolution, in all cases, all the surface of the earth is data from all the surface of the earth is recorded. But this is not the case in the case of vector data model. So now I hope you get the point why we need different types of data models to present different types of information. Is it clear? Do you have any questions? Some confusion? Are we here? Okay, please somebody speak up because I'm not on that screen, so I cannot see. Okay. Yeah. So this is basically the difference between raster and vector data models, and obviously we can go a little bit deeper, but time is short and we need to move on as well. But when you work with the data, you understand better. So I will show you some of the images or different types of data. Right. So if I open ArcGIS, I've shown you guys last time, but let's revisit once again to make the point across properly. Okay. All right. So let's use this data. All right. So here we have both raster as well as vector data here. This is going to be good. All right. I showed you guys this image last time as well. So this is basically a portion of Maharashtra, right? A district called Ratnagiri, and even a smaller portion of that district, in fact. So this is a smaller portion of a satellite image, which was much larger, but I had cut it out. So now, if I zoom in, right, you will see multiple pixels. And what this image basically is a raster data model. So the way the information is stored here is in the form of matrices or the pixels or a matrix of pixels. So we have different pixels representing different information, and depending on the reflectance we received from the surface uh, on the sensor, we have given it a certain value, and that value is then represented on our screen with either dark or brighter pixels, right? Darker or brighter pixels. So depending on which band you are looking at, you can infer some information, whether it's a river water body or a built up area or vegetation, in fact, or roads. So in this case, what you say is, for example, let's say this shoreline. Okay, this is the shoreline, this whole bit, right? And how the shoreline is represented here? By pixels, right? So when we zoom in, we see different shades of pixels, and on this side the pixels are darker, and on this side the pixels are brighter, right? And when I zoom out, it seems as if it's a continuous line, right? But if I zoom in, you can see that the shoreline is made up of pixels, right? And they are arranged as such, right? And so therefore
we are losing some information about the shore in this case, if you see, right? But if I use the vector model to represent the shoreline, right, what we will see is, let's say I have two shoreline for two different years. So focus only on this one. Okay. If you notice this shoreline, it is representing. It is much cleaner. For example, right? It is much cleaner, and if I close this image, let's say. So if you look at this image, this makes much more sense for a shoreline, right? If I want to store a shoreline, or let's say a road, or let's say a river body, using the vector model makes much more sense than using the raster model. What do you think? क्या opinion है आप Yes. लोगों का, right? So therefore we need both the data models, and we use both the models for different types of features. And in fact, in some cases, because of a certain requirement, we even though generally maybe a vector model is good for representing certain feature, but for a specific use case, we may convert it into a raster data model for some purposes. Okay, so therefore you need to convert, sometimes you need to convert data from vector to raster, and that is quite easy to do in our toolbox in ArcGIS, but we'll see if we need to do it or not. Okay, so moving on, we have different data sources. Alright, so for example, this data, the shoreline, I constructed it myself. Okay, but this image, right, this image was downloaded from USGS. So this is a satellite image, which obviously I cannot go up in the sky and take images. So I download data from the institutions which are taking data and disseminating it. So there are various different multiple institutions which are publishing different types of data which you can access both in raster as well as in vector form. And so what first I would like to ask, what kind of data you think is useful for GIS purposes? What kind of data do you need? Both depends upon purpose. No, right, both, but like what are the type of type or kinds of data that you need? So for example, you want to do, let's say, land use land cover mapping. What kind of data do you need for, to do land use land cover mapping? Or if you want to check the status of the water bodies in a country, or whether you have some or floods, if you want to map floods, what kind of data do you need? So when you are working in the GIS system, you want to do some, there is a purpose to working with the GIS system, right? And based on your purpose and your goals, you will be needing certain types of data, whether you create it yourself or you are going to take from someone else. So what are those kinds of data that you might need? अच्छा सैटेलाइट से तो हमें सिर्फ वैसे डेटा ही मिलती है Not very clear. मतलब हेलो Yeah, you're not very clear actually. am I clear now? Much better. So I'm saying basically satellites से हमें vector data ही मिलती है ना, then we convert it into raster data. No. No? Satellites say usually we get raster data. Okay. This one is the raster data. Yeah, satellites say we use My bad, sorry. mostly Cartesian planes पे तो हम sorry. Cartesian planes पे we make the vector data, no? So we get the raster data and then we convert it into vector data. Right, we get raster data, and then from satellites we usually get, in almost all cases we get raster data, and then we can convert it into vector data if we want. Okay, in almost all cases, maybe some types of data are non-image based, so those may not be in. In fact, some data are in fact in neither vector nor raster. In fact, so whenever you say attribute data, those are the type of data you are referring to. So basically, they are non-spatial data or non-spatial data models. So when we are talking about vector and raster data models, these are in fact spatial data models. So we are trying to represent space, right, or spatial features, features that are associated with space or within the space. When we are using the raster or vector data models,
we are trying to represent those inside the systems. And then there are certain types of features that are not spatial in nature. So for example, my height or my name is not a spatial data, right? So to represent that, we use non-spatial data structures, or rather sometimes we say say yeah, non-spatial data structures, or attribute data, in fact, sorry. Yeah, right. So the type of data that we may need for GIS would be, let's say, what satellite images, in fact, right? So you've seen satellite images, and maybe you have used satellite images. Then so see, sometimes you need to build the data, and sometimes you can get the data, right? So you look at both the things. So satellite data is available to you, right? And a lot of vector data is also available to you. So for example, Indian websites like Bhuvan, I think, right? This one, Bhuvan, does give you some vector data. And then there are other sources as well where you may be able to get vector data. For example, there is OpenStreetMaps. You might have heard about OpenStreetMaps. You can get some data, vector data from there as well, right? And those are pre-built by individuals like me and you, and then the data is published and you can download it. So the type of data you might need is, for example, census, right? We discussed last time, right? Why would you need census data, or when will you be needing the census data, for example? Analyzing For planning purposes. purposes, Planning purposes. What sort of planning do you think? uh, like any sort of planning, regional planning, कहाँ पे growth कहाँ पे है और हमें like कहाँ पे कौन से growth models वो करने हैं. Right. So, for example, if Also अगर yeah, go on. जैसे हम लाइक किसी जगह का कोई एट्रीब्यूट वगैरह भी स्टडी करते हैं, मे बी लाइक सेक्स रेशियो, या वहाँ पे हमने कोई पॉलिसी लेके आनी है, तो वो एट्रीब्यूट डेटा हेल्प्स टू एनालाइज कोई भी पब्लिक पॉलिसी अगर हमें एंटरटेन करना है तो. Right. So my question is then, why are we bringing into GIS? Can't we just look at the Excel sheet and be done with, right? We can also look at the Excel sheet and create a graph. Why do we need to get that kind of data into GIS? there it becomes easier when we have like visual image or visual interpretation of something rather than just being it in the table. Right. So the advantage of Also GIS. querying is easier. Right. So no, queries also in Excel. So for example, we are using SQL, right? SQL to make queries. All right, and that is also possible in Excel. For example, I mean, I cannot show you right now, but if you have a large data set in Excel, and you can run the same kind of operations in Excel as well as in GIS. So the primary advantage of bringing those kind of data into GIS is essentially to, for example, you have non-spatial data or attribute data, right? Then you interface that data with the spatial information as well. So for example, in this case, let's say this is the map of India, right? And we want to show population increase or decrease. So if we have an Excel sheet and we simply have numbers, it's a little bit hard to read the information, right? And then if we show that information with a graph, it's much easier, right, to understand. If I show that graph to somebody, it's quite easy for them to understand, okay, this place has a greater sex ratio in favor of male, and the other place has a greater sex ratio in the favor of females, right? It's quite easy. But the advantage of putting it on to a map, for example, or into the spatial domain, is that then you get another locational analysis is possible for you. Then you can look at how the distribution is for the sex ratios. For example, it is quite hard to infer from the Excel sheet how the sex ratio is distributed across India. So for example, when we create a map or put the information on the map, we might see that, okay, the south has much greater, let's say, sex ratio in favor of women, and the north has sex ratio in favor of men. So these kind of inferences can be made
far easily using your GIS systems. And then obviously there are some other advantages as well when you use there are some spatial analysis as well which you can perform, right? So therefore those are the specific use cases when you will be using GIS. And remember, always bringing everything on the map may not be very useful, right? Because it's extra work, and sometimes the point is put across even if you use a simple Excel sheet or if you use a graph. So you don't have to create a map for everything, right? But if you think that the information or the communication is better when you are using a map, right? In that case, when you will bring information into GIS. And like I said, the other advantage is that you have spatial analysis which can be performed in GIS systems which cannot be performed elsewhere, right? Because you do not have coordinates or locations for those information. Alright, so I will show you how to interface spatial data with attribute data or census data, right? Okay, so before that, let me show you some platforms where you can download satellite data. Okay, and there are different types of, in fact, dozens and hundreds of different types of data that is produced daily for you to download and you to work and research on from satellites. Okay, so one platform that you will need or use is Earth Explorer. This is from USGS. Please, so what you do is you basically open a browser, right, and go search for Earth Explorer. Right, you go to this website. I've already created an account, so when you go to login, right, create an account. It's rather long, but create an account, and then you will have an interface, something like this. Let me log in. So from USGS, primarily you will be downloading data from US satellites. So satellites like Sentinel, sorry, not Sentinel, Landsat. Okay, Landsat. Then I think MODIS is also there. Aquaterra are some of the sensors that they have. Then what other satellites do they have? Let's see. So if you visit this website, go to the place where you want the data for. Let's say we go for Delhi, zoom in on it, or in fact, so there are multiple ways to select your area. The first one is to use the polygon. Okay, and click on polygon and you simply drop a point on the map by basically left clicking. Yeah, so when you left click, a marker is dropped. Right, now from their database, from the last class, if you remember, storage is a huge part of GIS systems, right? And this is where you can see how the data or databases are working to help you get the data you need. So on the USGS platform, they may have millions and millions, if not billions of images. Okay, hundreds of millions of images, I'm sure, is available on their platform. Okay, and if you imagine a physical library and you want to go find an image, right? It's quite hard. In fact, even if you catalog properly, it's a bit tricky to reach to that information. And here, the way you locate that information, for example, I need images for Delhi area. What I've done is I've dropped a point. What that point does, basically takes the latitude and longitude, and that is a unique identifier for that position, obviously, right? Because latitude and longitude is not the same for any other place. So if I take a point here, that will not be the same as this point, right? So therefore each point is unique. Okay, and when I drop a point over Delhi, right, I'm asking it to go look for images which includes or correspond to this point. And in fact, I can create a polygon as well. So how do we create a polygon? What we basically do is we drop a point here, we drop a point here, we drop a point here, and we drop a point here. In fact, you don't have to make a square, you can make a quite complicated polygon as well. So for example, let's say
I make a polygon like this. I can make a polygon like this, but it does not make sense to work so hard, right? Usually dropping 2-3 points or 4 points is enough, right? So I was doing it just to show you guys. Now, using a single point for Delhi is enough. Can you answer why? Is it enough for this case? For Delhi, dropping a single point may give us images for whole Delhi. Why would that be? Because if you remember, Landsat has a swath area for 80 kilometers. The whole expanse of Delhi is not that huge, right? So if a point is dropped on Delhi, right, it's quite likely that the images that it is going to look for will include whole of Delhi, right? Do you get it? Yes. So Yes. then there are some different parameters which we can include as well. So for example, let's say I'm looking for data for this month, the month of February 2024, right? In that case, I would not want any excess data, because why would I want to look at so many images, uh, the whole repository for Delhi, when I only need data for this month? So to do that, I can select from and to date, and what it will do is it will only bring you the images which correspond to these dates, the range you define, okay? And then another parameter they have for you to select is cloud cover. So basically what it will do is it will only show the images which have the given cloud cover. So for example, if I select 0 to, if I slide it across 0 to, let's say, 50%, so it is possible that for this area, or the image that is brought to you, it may have different levels of cloud cover. If it's the monsoon, a huge portion of the sky is covered with clouds, right? In that case, the data usually is not usable to do surface analysis. In that case, maybe if you want to work with the clouds themselves, it may be useful. But if you want to work on the surface, if the cloud covers the surface and you are not, then you will not be able to get information from the surface to the sensor, and there's basically data loss. So if I have a cloud over the whole of Jamia, information from Jamia will not reach to the sensor, right? Data is lost. So when we want low cloud cover, basically we want the whole surface, right? In that case, usually select a lower value, right? And in fact, selecting a higher value may also give us the data we want, because the image will be, let's say, 80 by 80 kilometer. A huge area will be covered by the image, and only a smaller portion of that will be New Delhi, right? So maybe the cloud cover is 50%, but all of Delhi does not have any cloud over it. So having a higher value may also give us what we want. Having a lower value usually ensures that you will not have any cloud cover, right? And unknown cloud cover value, sometimes the what they do is USGS will perform some pre-processing on the images. The data that is collected from the satellite, it is pre-processed and then sent to you. So sometimes the cloud cover, it is possible that they are using automated systems, and sometimes there is some fault with how the data is processed, and the cloud cover value is not extracted properly. In that case, you won't have any value or some random value. So in those cases, maybe you want to include those images, and maybe you want to exclude them. So you can select whichever. Alright, then you move to data sets. In data sets, so these are the various data sets that are available. So all of the data sets are not available for all the places. Many of them are only available for USA, okay? Because obviously rules and regulations, maybe India does not want USA to publish those data, or USA may not in fact have those data to give it to you. Whatever may the reason be, not all data will be available for you. So some data is available for all places on the USGS platform. So Landsat data is usually available for the whole of the earth. So now when you go to Landsat, you will see let's say Landsat Legacy, Landsat Collection 2 DEM, Landsat C2 atmospheric auxiliary data,
and site collection to level 1, level 2. So these are different, basically what these are different level of processing that USGS has done themselves, and then they are publishing the data. So if you download, let's say, land site collection to level 1 data, in the level 1 data, very basic level of, let's say, pre-processing has been done. So what they have georeferenced the images. In fact, you might not know, but when satellite images are taken, they are not georeferenced, right? So earlier, what they used to do is, whenever you got the data from the institutions, in fact, let's say. What ISRO, if I asked NRSC to send me data, right? NRSC is a body of ISRO, and it is responsible for collecting and disseminating your remote sensing data. Okay, so if I asked NRSC to give me some data, it will copy the data into a CD and send it to me. And now that data would be in the raw form. I will need to georeference it myself. Nowadays, we get the data pre-processed and it is already georeferenced. Okay, so when we are downloading satellite data, it is already georeferenced. And in level 1 and level 2, there are there are basically different levels of pre-processing. So in level 1, we have radiance values, and in level 2, we have reflectance values. I don't know if you guys have read about these. Are you aware of radiance and reflectance? No. No. So radiance basically is the amount of energy that has been recorded at the sensor. Okay, and reflectance is basically the amount of energy that was received on the surface and then got reflected back. So the difference basically is, in the case of radiance, the total amount of energy that the sensor recorded, okay, that is digitized. In the case of reflectance, you are basically looking at the ratio, how much energy came to the surface and then how much exited it. So in the case of passive remote sensing, if you remember, the source of light is the sun, right? So sun electromagnetic energy comes from the sun, hits the surface and then exits towards the sensor, right? Now if you look at the basic difference between radiance and reflectance, how would you understand it? The energy came from the sun, got reflected and recorded the sensor. The sensor does not know how much energy came to the surface, right? It only knows how much it received at the sensor, right? Does it make sense? The sensor is not aware of how much energy came to the surface. It is only aware of how much Yes. energy got to the sensor, right? So that value is radiance. Okay, and then the reflectance is basically then calculated later on. We what we do is we check how much energy came from the sun, and there are formulas to do that. Basically, sun is usually emitting an specific amount of energy on the surface of the earth. Depending on which latitude you are and what is the angle of the sun, a lot of parameters are taken into account, and a certain amount of energy will be uh, shot towards the surface per unit area, and then it is reflected back. So by merging those two data, we get reflectance values. And usually whenever we are doing analysis, we need reflectance more than radiance. Okay, so in most cases we are using reflectance for remote sensing analysis, but radiance is also used. Okay, sometimes radiance is also used, but mostly we are working with reflectance. So when you go on this platform, I would advise you to download level 2 data. Okay, the reflectance. Maybe it would not make any difference to you when you look at the image. Okay, you might say it's the same thing, but the information is stored in the pixels are different. Okay, so whenever you are, for example, later on maybe you are going to develop NDVI or different indices. In those cases you would be needing reflectance. Okay, that is the way you perform the analysis, not on radiance values. Okay, and the numbers that you will see in the system, for example, let's say I go to this image and there is a tool called identify. Okay, if I go to identify and I zoom in, I click on a pixel. Okay, a certain value will be shown. The pixel value is minus something, right? And the stretch value is, okay, let do have original
Original. Let me find an original satellite image. This is not an original satellite image. Let's get Delhi. So let's take the, let's say, red band. Okay. So in the red band of Delhi, so I zoom in and I click on a pixel. Okay. Let's say I click on this pixel. This pixel has a certain value, right? 13,659. If I click on another pixel, this pixel, it is a different value, 10,670, right? And if I click on brighter pixels, it has higher value, 13,000, let's say in this case. And if I click on darker pixels, let's move here, it has a smaller value. And in fact, even darker pixels will have a smaller value. So basically, the display is assigning darker colors to smaller values and a brighter color to higher values. Okay. So this value is for, let's say, LC808 L2. So this is level 2. So the information that these values represent is reflectance. And in the case of level 1 information, radians will be represented. And in those cases, the numbers may be similar, so 13,000, 10,000, 15,000, right? But what they are representing is radians. Okay, I hope that is clear. So on the platform, let's say I go and select Landsat 8, 9, and I ask it to show me the results. Okay. Log in before doing this, because if you are not logged in, you will not be able to download the data, but you will be able to look at the data. So on this platform, it is showing this image covers this area. Now if you see, some part of Delhi is missing, right? So maybe I need the complete Delhi, or I need a small, I don't need the whole Delhi. Depending on that, I will select an image, and obviously I will look at the date it was acquired. So I may have certain requirements for the dates, and I may have certain requirements for the area, and I will use the data which meets both those conditions. In fact, there are ways to download multiple images and then merge them together. Okay, but for simplicity's sake, we are only going to use a single image. Okay, so let's find an image. Right, look at this. So this image covers your whole of Delhi, right? So when you download this data, the whole of Delhi will be covered, right? And in fact, you can see the thumbnail of this image as well. So a very low resolution image will be shown to you to get some idea. So cloud cover basically is non-existent, right? There is a little bit of cloud here, but on the over Delhi there is no cloud. Okay, so this is a way you can see the data you are going to download. Okay, wait. Then you have download options here. If you click on download options, you can download. You know that Landsat has multiple bands, and you can download the specific bands that you need, or the whole data set for that area on that day. So to do that, you click on product options and you click on this button. And if you want to download a specific band, you click here or here or here, whichever you need, right? You click there and the download starts. So I'll show you, but I will not download. I click here, the download starts, right? If you wait, the file size is 883 MB, so it takes up 9, but the file will be downloaded, and the file is zipped, so you unzip it and then you import into ArcGIS. Okay, so this is one platform, and there are other platforms to download similar types of data. For example, Copernicus hosts data from European Union, so they have a number of satellite programs, basically Sentinel-1, 2, 3, 4, and goes on to about 6 or 7, and all different satellites are collecting different types of data. And on the Copernicus platform, you can download data from those satellites, right? And then we have some indigenous platforms. So in India we have Bhuvan, and then we have Bhoonidhi as well. So this is a new platform, and I haven't explored it a lot, but a lot of data is available on Bhoonidhi now. And okay, so you may have read about list 1, list 2, list 3, AWIFs, WIFs. Then we have a panchromatic sensor. We in fact also have microwave sensors as well, right? And there are then meteorological satellites as well, which are the data from those are hosted on, I don't know, was more this.
No. Was it Modis? No, it's not Modis. So, meteorological. India is hosted. Okay. So, platform is called. IMD also has some data, but I'm forgetting the name of that platform. So, in fact, on that platform, you mostly get already processed data. Right? I don't remember the name. What was the name of that? Anyway, if I remember, I'll tell you guys. So on that platform, you also have different data, and on each platform, the interface is different, right? So if you want to download data on Bhoonidhi, go look for a tutorial on YouTube, and you can learn how to download data, right? So I basically showed you how to get raster data or satellite data from some of the sources, right? Then we have raster data as well. So on the Bhuvan platform, if you go, right, some raster data is available there, and in fact some vector data is also available there. So your topo sheets are available on Bhuvan. Then some satellite images are also available on Bhuvan. Some maps are available on Bhuvan. In fact, Bhuvan also has 2D and 3D maps, right? So like Google Maps, you have Bhuvan 2D, and like Google Earth, you have Bhuvan 3D, and they are also kind of GIS platforms. So some analysis can also be done on the web itself. Okay, you don't need to download a software like ArcGIS or get a license. You simply go to the platform, and some basic analysis is also possible on Bhuvan platform. Okay, then they have thematic maps. So on thematic maps, the type of data that you can see is, for example, land use land cover is available on Bhuvan, right, for whole of India. Then land degradation map is available. You have urban land use map, wasteland map, glacial lake water bodies. So these are some of the types of map, data or maps that is available, and most of it is not downloadable, but some of the data is also downloadable. So you go and explore. Okay, then so let me show you. Okay, let's go to land use land cover 10, this one, 2018, and go for Delhi. Let's click on view. So if I go to Delhi, it has given me a map of Delhi, right, and the legends are here. So if I zoom in, this should change, I believe. Okay, it says static. So here you see a color, you can match the color with this legend and identify what it is basically. So Delhi yellow. So yellow is agriculture, right? So these are agricultural land, and then there are different shades of yellow, and those different shades of yellow are either plantation, agroforestry, cropland, single cropland, multiple cropland. So they have classified it quite let's say in quite a detailed way, right? So if you want to look at a particular place on the in India, the land use land cover for that place, you can go to Bhuvan, the thematic map services, and check, right? So in fact this is downloadable, so you need to log in, but the data for land use land cover is downloadable, but some of the data is not downloadable on this platform. Then on Bhuvan, you can in fact get shapefiles for all of India. So sometime I think you guys are creating shapefiles, right, for a particular district. So if you want to make your work easy, you can go to, say, spatial, sorry, shapefile, and then you go Bhuvan. I'm not sure whether it was SOI or no. I think that's a Survey of India. Okay, shapefile SOI. So Survey of India is another website where you can go and get some data. So the topo sheets are available here actually, not on Bhuvan. So if you go to Survey of India shapefile, you can get different data is available here as well. Some of it is free, some of it is paid. Okay, so you can get let's say they have georeference color rasters, so these are paid actually, but you can get color rasters or
basically topo sheets, which are not georeferenced, and those are for free for you to download. And the scale is fixed, so I think the scale is 1 is to 50,000 or something for those images. Okay. Then the best part here is you can go to administrative boundary database, right? If you click here, all these different levels of administrative boundaries are for you, are free of cost. Okay, so let's say product code 0VF 1M6. So content 1 million sheet, entry up to taluk level, right? So in this some of the details is given for this data set, entire country up to taluk level with headquarters. So in this data set, this is the type of information that is available. And this, if you see, entire country up to district level with headquarters. Okay, state up to taluk level, not the whole country. So this looks similar type of data, but maybe there is some difference. State up to district level with HQ. So some difference maybe between entire country and state. I have not checked, but let's say I download this one, right? I click on buy. You first have to sign in though. You sign in. Let me 366. Could you guys give me a minute? Okay, I need to pick a call. Okay, sorry. So we can download the data, the whole shape file, right? Date user profile. Maybe later. करना पड़ेगा. Resignation level. Education है क्या? ठीक है. Whatever. ठीक है. तो you create an account, you log in, right? Because otherwise you will not be able to download the data. Let's say I want to download this, because this will have all the information that the other image has or the other data has, but obviously this is much more detailed. But this will, when you want to work on a, for example, a single state, it will require some work to get the whole state out of this image. Okay, so therefore download maybe both of them or only one of them, whichever fits you. Okay, let's say view cart, and I want to place order. I agree. Proceed to download. So this used to be live, but I don't know. Right. Okay. So you follow the process, and I think you can download it instantly. The download is started, right? The file size is 151 meters. So on from the this platform, Survey of India, you can download the administrative boundaries of the whole of India, right? And then you don't need to digitize each and every district or block, whichever is, for example, administrative area you're working on. You don't need to digitize it manually. And in fact, when we digitize it manually, we are ought to make some mistakes, right? But if the government is giving the data to you, you are supposed to use it, because the data is supposed to be most accurate, right? Because the government made it. So we'll download that. Alright, so this is one vector data. I'll show it to you after it downloads. So this is a vector data, and before we were looking at raster data. Right, so Survey of India is one of the platforms where you can get your vector data. Then I said, what did I tell you guys? OSM. OSM is one platform as well where you can get vector data, but maybe you won't need to go here, right? But just for information, you can go to OpenStreetMaps and download some data. Okay, then you have Census. So Census is also interesting. Census has tons of data for you. So now, like we discussed, why would we need census when we want to do some analysis? For example, let's say we want to see growth rate across the country, or let's say
In fact, GDP for specific blocks or districts or states, we want to compare those, right? In those cases, we will need census, and tons of different data is available on, in fact, on census. So to do analysis or to create maps, we will be needing census data, and we can go to the census website and download data. Let me find where we can download the data from. Data and resources, census questions, digital library, census tables. No, census tables, right? 2011. So 2021 census has not been conducted yet, so the data for that is not available, obviously. But for 1991, 2001, and 2011 is available, and you can go here. For example, there are multiple tables, so the whole database is not available in a single file. I was looking for it, but it is separated and categorized. So for example, this table: number of villages, towns, households, population and area, India states, UTs, districts and sub-districts. So this will store this information. So for example, if I click on this and download the data, right? Open file. This is a non-spatial data or attribute data. So it is in a tabular form. Okay, right? And it has different columns and rows, and each row represents, in this case, different sub-district, I believe. Yeah, in different sub-district. Okay, because that is the lowest level of administrative boundary that this data is representing. Okay, and each column is representing different information. So for example, we have name, we have whether it is Kupwara urban total. So they have arranged for a single, let's say, sub district, I believe. They have total, so all these fields, the total of them, the rural and the urban population for them, right? And then we have number of inhabitants, number of villages, inhabited kitne, then we have uninhabited, then we have number of towns. So the census data is like this. So different types of, when you download a different table, you will have different information. Okay, so now our job is to interface these. We want to merge the administrative data, right, the boundary data that we have, with the census data. And the good thing is, there are ways to join the data in the GIS systems. So let me look at the time. What we do is, I've shown you. Do you have some idea about the type of data that we are working with or have in GIS? Do you feel comfortable with the types of data that we have in GIS? Guys here? It's good. Right, Hello. so yeah, these are the types of data, and then obviously we have only looked at the data. There are then you will be using this to do whatever you want. So you are going to utilize these data sets to meet your goals. Okay, so at this point you will be looking at very simple tasks, right? But as you go ahead, you will be developing maps or doing analysis using these data sets, which are far more complicated, right? And so if it's clear, or if you guys have any queries or confusions about that, what we have discussed so far, otherwise you can move on. You guys want to ask something? Anybody else? Can you please repeat reflectance, radiance and reflectance? Radiance समझ में आ गया, reflectance पता नहीं चला एक बार. All If you right, all can right. repeat. So what we do is basically, let's go here, right? All right. मैंने काफी arbitrarily बता दिया था, right? So this is sun, this is the Earth's surface, okay, and then we have a satellite here. Obviously, it's not to scale, okay. The satellite is far more closer. Okay, this is the satellite. Okay, so something comes from the sun, right? What is it that comes from the sun?
Energy. Yeah, energy in the form of Light. EMR. Rays. right light, or in fact EMR, electromagnetic radiation, right? And you know the idea of electromagnetic spectrum, right? So we have gamma rays here, right? And as we move on, the wavelength increases, and then you have radio waves, right? And in between we have somewhere here maybe visible light, right? Infrared, we have microwave, here we have UV, right? X-ray, then we have cosmic ray as well. So cosmic ray comes before gamma, I think. Okay, so this is the spectrum, and what that spectrum is electromagnetic radiation, right? The spectrum represents the electromagnetic radiation, and in fact the different wavelengths of the electromagnetic radiation. Now the energy that comes from the sun is in the form of electromagnetic radiation, and if you look at a specific area of the Earth's surface, right? I have taken a 1 meter square, for example. Okay, I've taken 1 meter square of the surface of the Earth, right? A certain amount of energy will be hitting this surface, right? Right, a specific amount of energy Yes. at a given point will be hitting this Earth, and so there is a constant, in fact, for how much energy is received by a certain portion of the Earth's surface at each latitude, and so depending on how far the sun is, right, there is a close relationship between how far the sun is, and therefore it affects how much energy will be hitting the surface, that a specific portion of the Earth's surface. In fact, the latitude also affects how much energy will be received by a specific portion of the Earth. Can you tell me why the distance or the latitude of the Earth's surface, the distance between Earth and Sun, or the latitude of the Earth's surface, makes a difference in how much energy a certain portion of the Earth will receive? यस, विद रिगार्ड्स टू लैटिट्यूड्स, अगर इक्वेटर के पास है तो वहां पे जब जाती है तो इट इज मोर इंटेंसिव, वाइल जब पोल्स की तरफ जाते हैं तो एरिया ज्यादा कवर होता है, इट इज इंक्लाइंड, एरिया ज्यादा कवर होने की वजह से पर यूनिट मतलब कम पड़ता है. Right, right. So diagrammatically एंड हम देन लोग, इट इज अगेन अ पीरियड एंड पेरिहिलियन का कंसेप्ट. right. So maybe, वो सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, दैट इज पेरिहिलियन. right. So diagrammatically अगर हम देखें तो for example अगर let's say this diagram is for the equator, okay? So sunlight comes, okay? Because as it moves it expands, okay? So therefore if we increase the distance it expands more, right? In that case that same amount of energy is being put over a larger area, and a smaller portion of this surface, right, if this whole area will receive less energy, because let's say this energy is expanding like this, right? It is expanding like this, and if I move further, that whole energy is covering a larger area, and if I am only taking 1 meter square again, so for example I took 1 meter square area here and 1 meter square area here, the whole energy is spread across whole of this space. But if I take only 1 meter square area, less amount of energy is hitting this surface. Okay, so this is one part of the answer. Then the other question was basically, why does the latitude of the Earth matter, right? So for example the Earth is this, right, and sun is here, and the light is hitting everywhere. Okay, so on the equator the lights are hitting, or the electromagnetic radiation is vertical, okay, on the equator, or in fact above or below the equator, depending on where the Earth is in Earth's place in the rotation around the sun. So sometimes the northern hemisphere is closer to the sun, and sometimes the southern hemisphere is closer to the sun, right? So equator is not the place where maximum radiation is received. You might have read about insolation, right? The ITCZ is the zone which receives maximum insolation, right, depending on the season. Okay, and the season is affected by the rotation or revolution around the sun. So when we move over the latitudes, right, so this is, let's say, 0 degree,
This is say 23, let's say 66, okay, and 90. So if you see, if I take a solid angle for the sun, okay, solid angle of the energy of the sun, okay, ये काफी बड़ा बना दिया actually one angle ये, and let's construct another angle, and I say both are, let's say, 1 degree, okay, both are 1 degree, right? But this 1 degree is covering this area, only this much, but this 1 degree, because the earth is pushed backwards, right, on the, अगर मतलब हम अगर ऐसे बात करना चाहें in reference to this, right, if we create a tangent here, the earth is pushed backwards, and in that case यहाँ वाली जो लाइट है वो तो पहले हिट कर जा रही है, but some of the light is going farther away. In that case वो जब हो रहा है तो larger portion of the area is receiving the same amount of energy. Okay, and the thing is कि हम assume कर रहे हैं कि sun हर direction में same amount of energy release कर रहा है. Okay, so if the area is smaller, the intensity of the light is greater, or the electromagnetic radiation is greater, as Manmohan said, right? And here the area is larger in this case. Okay, therefore the energy per unit area goes down. Okay, now for your radiance and reflectance, what basically radiance is, the light from the sun came, right, it got reflected and received at the sensor, but the sensor, as I said, is not aware that light is coming from somewhere else, right? उसको कोई information नहीं है इस चीज की, उसको ये पता है कि किसी एक जगह से light आई, उसको hit करा, या electromagnetic radiation आया, and it registered that information, okay, and उसको सिर्फ इतना ही पता है कि उस point से आया था. Now that the energy that is recorded, the unit it has is watt per meter square, I think, or per meter square per steradian, I think they say. So it is either watt per meter square. Sorry. G steradian. Yeah. So it's either watt per meter square or steradian. I'm not sure, but yeah, if you're saying steradian, then it is steradian, and in fact, it is also per wavelength. So right. So for each wavelength per lambda. So for each wavelength, the amount of energy is different. Okay. So the radiance or the spectral radiance in that case, if you have lambda, in that case, this gives you your radiance. Okay, but reflectance is a bit different. In reflectance, we also have information about how much energy came to the surface as well. Okay, so reflectance is a ratio between how much energy came onto the surface and how much energy got reflected back to the sensor. Okay, so because energy, all the energy is not reflected, right? Some of it is absorbed, some of it is transmitted. So the nature of interaction with this with the feature is different for different wavelengths, and when the feature is different, the interaction will be different, right? You must have read about it. So it is basically. Bhavan, can we simply say we measure the intensity of reflected rays in radians? We measure the intensity of reflected rays in radians. As radians. As radians. Maybe maybe, yeah. Sure. I don't know, maybe it may be technically wrong, but generally कहने के लिए सही है, because I'm not so sure, मतलब हम उसको intensity कह सकते हैं कि नहीं, okay? Alright? So I'm not so sure, alright? Because intensity कोई specific meaning है उसका, right? And okay. So radiance and reflectance is clear. So reflectance does not have a unit. Okay. I think I have some notes. एक मिनट मुझे जरा time दो. So yeah. So reflectance. Oh, sorry. Radiance is basically radiant flux reflected towards the sensor. So energy is exit or reflected in a solid angle, right? So in 3D space, in 2D space, how do we construct a reflectance, right? If we have a mirror, for example, energy came, it got reflected back, right?
but in a 3D space the reflection will not be like this. It will make a cone, right? And this will be a hole. So in this case this is a steradian, okay, or radian or steradian, something like that. So when the energy in the case of radians, we are looking at how much energy exited in a solid angle, towards a solid angle, okay. In the case of reflectance, we are basically looking at how much energy came to the surface, so that will also be a solid angle, right, and how much energy exited, right, that will also be a solid angle, and the unit for both is the same. So how much energy came to the surface and how much energy exited, the unit is the same, therefore the units cancel out, and you end up with a ratio between how much energy came to the surface and how much energy exited or got reflected from the surface, okay. मैं मेरे पास कुछ वो हैं फॉर्मूला वगैरह लिखा हुआ था, आई विल सेंड इट टू यू गाइस, ओके, ऑलराइट, क्लियर? जी भैया। Alright, so what else do we have? जी भैया। Alright, so let's quickly create a vector data, right, in ArcGIS. Create a new, my templates, new. Did I tell you guys about geodatabases and how we should create a new geodatabase when we are working with a new environment? मैंने बताया था क्या? जी भैया। Okay, alright, so let's not save the changes. Alright, so I have a new map here, right, and I think we did some georeferencing last time, so let's import that map. GIS tutorials 24. So we have a georeference map, okay, and what I will quickly do is I will show you how to create a spatial data set, and मैं पूरा बहुत accurately नहीं बनाऊंगा, मैं बस एक general rough idea दे देता हूँ. So if you want, मतलब accuracy basically comes when you zoom in and you draw the lines very carefully, okay, but मैं rough idea आपको दे देता हूँ कि कैसे बनाया जाता है, and then accuracy is on you, okay. So now to create a shape file, so for example this image is a raster image, right, this is a raster image. If I zoom in, you will see pixels that are representing this, okay, these are pixels, right. Now for some reason I need to convert it into vector, right. So I think we were downloading, हो गया डाउनलोड, ओके, तो उसके एक बार दिखा देते हैं इसको, Control X, tutorials, so extract. ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो कई सारे इन्होंने क्या कहते हैं, बहुत सारा अच्छा खासा डेटा यहाँ पे, सब डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री दे रखी है इन्होंने, स्टेट बाउंड्री दी है, मेजर टाउन्स दे हैव, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, तो हमें जो ज़रूरत है हम बेसिकली वो ले लेंगे, राइट. हम स्टेट बाउंड्री फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो हम स्टेट बाउंड्री लोड कर लेते हैं उसमें. तो हेयर व्हाट वी डू इज, इफ़ यू नोटिस हमने ये इमेज जियो रेफरेंस कर दिया, राइट. हाउ डू वी नो, बिकॉज वी हैव डेसिमल डिग्रीज शोइंग हेयर, राइट. तो ये अभी हमने एक प्रोजेक्शन सिस्टम हमने इसको डिफाइन करा था, और इसको हमने बेसिकली अर्थ पे, लाइक ए टोल्ड डिवाइस, हमने एक 3D मॉडल बना रखा है अर्थ का, जिसके ऊपर इसको प्लेस कर दिया है. ऑब्वियसली वो ग्रिड हमें नहीं शो कर रहा है अभी अर्थ का, बट यू कैन इमेजिन कि एक ग्लोब है जिसके ऊपर ये आपकी इमेज प्लेस्ड है फिलहाल, ओके. सो सिंस वी डाउनलोडेड एंड एडेड सम इंफॉर्मेशन, लेट्स रिफ्रेश इट, go to learning GIS tutorials and the data is here. So if you see यहाँ पे आपके पास there are multiple files, right, but यहाँ पर आपके पास एक ही दे रहा है, right, for each there is one. So इसमें कुछ information crucial, जैसे for example let's only focus on district boundaries. So all these have the same name, but the extension is different. So for example this is CPG, I don't know what CPG is actually, but the data DBF stores is your attribute, basically attribute data, okay, stored with the spatial data. So the boundaries are stored somewhere else and the attribute data is stored in DBF, and where is the
sorry, the boundary stored in .shp. So basically this file which has 60 is of 65 MB. This is actually the coordinates or the points I showed you guys in the vector model. Different points will be used to store or build a complete line and then polygons and basically the boundaries in this case. क्योंकि हम real object यहाँ represent कर रहे हैं तो हमारे पास administrative boundaries को हम इस फाइल में स्टोर कर रहे हैं, ओके, .shp वाले में. एंड देन देर आर सम सपोर्टिंग फाइल्स एज वेल, जैसे prj में आपका जो प्रोजेक्शन पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली वो स्टोर्ड होते हैं. एंड देन मे बी आई नो, सो इसमें से जैसे sbn है, spx है, shx है, ये सब बेसिकली इंडेक्सिंग के लिए यूज होते हैं. तो व्हेन यू आर ओपनिंग द फाइल और वर्किंग विद द फाइल, नॉर्मली ये हेल्प कर रहे होते हैं जल्दी से लोड करने में. ओके, सो दिस इज हाउ द शेप फाइल और .shp वर्क्स, है ना. ये एक फॉर्मेट है, ओके, जिसमें आप वेक्टर डेटा स्टोर करते हो. एनीवे, सो हम मान लो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, ब्रिंग डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री. सो अभी देखो हमारा ये मैप जो था ये जीरोरेफरेंस्ड है, दैट इज वाई ये उसके ऊपर ओवरले हो गया. ओके, अभी मैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज में जाके डिस्प्ले और मैं ट्रांसपेरेंट कर दूं ऊपर वाली लेयर को, लेट्स से 90% ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं इसकी, टू मच, मे बी 50% और लेट्स से 60%. ओके, तो अभी देखो कि काफी ठीक ठाक करस्पॉन्ड कर रहा है, राइट. यहाँ पे कोई लाइन है, इनफैक्ट अगर मैं इस लाइन को ब्लैक कर देता हूँ, थिकनेस बढ़ा देते हैं. नाउ यू सी दिस लाइन, right, it follows quite closely with our raster image, right. तो थोड़ा बहुत देखोगे डिफरेंस है. तो देयरफॉर दोनों, क्योंकि ये जो इमेज है आपके पास, ये स्कैन्ड इमेज है, जो रास्टर इमेज आपके पास बेसिकली स्कैन्ड इमेज है. एंड स्कैनिंग में भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे आप डीपीआई वगैरह आपने मे भी सुना हो, मे भी ना सुना हो, वो बेसिकली डिफाइन करेगा आप कितने एक्यूरेटली इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो. तो जितना ज्यादा डीपीआईज आप रखोगे उतना ज्यादा एक्यूरेटली आप स्टोर कर रहे हो. तो मे बी ये स्कैनिंग जो है उतने हाई डीपीआई पे नहीं हुई है, या फिर क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट ने खुद कराया, तो वी एज्यूम कि उनकी जो एक्यूरेसी होगी दोनों इमेजेस में या दोनों डेटा सेट्स में इक्वल होगी. बट इट इज पॉसिबल कि दोनों डेटा सेट्स में एक्यूरेसी थोड़ी डिफरेंट भी हो. ओके, सो इनफैक्ट ये जो आपके पास रास्टर इमेज है, राइट, दिस इमेज इज बिल्ट अपॉन, इज एक्चुअली अ वेक्टर डेटा, राइट. उसको उन्होंने रास्टर फॉर्म में कन्वर्ट करा है. जैसे मैंने कहा था कि कन्वर्जन करते हैं, राइट, इन सम केसेस. तो इमेज उनको मैप जब उन्होंने बनाया तो फाइनल आउटपुट जो उनका है वो रास्टर फॉर्म में कराया उन्होंने, वेक्टर फॉर्म में नहीं कराया. ओके, क्योंकि ये रास्टर जो इमेजेस जो होती हैं जनरली फार मोर इजी फॉर द कंप्यूटर टू प्रोसेस. ओके, रास्टर डेटा जो होता है इट्स क्वाइट इजी फॉर द कंप्यूटर टू प्रोसेस, जल्दी से, मतलब जैसे मूवीज वगैरह देखते हो या फोटोज होती हैं उसको काफी जल्दी प्रोसेस कर लेगा. बट व्हेन यू हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पॉइंट्स वगैरह होते हैं तो उसमें उसको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है उस केस में, राइट. लॉट ऑफ कंप्यूटेशन इज रिक्वायर्ड, जो कि सीपीयू को लोड जाता है और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इट टू प्रोसेस. सो अगर मैं बड़ा डेटा सेट लोड करता हूँ तो मेरा कंप्यूटर अच्छा है तो वो बड़ा इंस्टेंटली लोड कर रहा है, बट इनफैक्ट यहाँ भी वेट कर रहा है, राइट. तो देखो टाइम लगा रहा है लोड करने में, राइट. अच्छा होने के बाद भी उसका ये हाल है. बट इमेजेस को इनफैक्ट आप देखोगे आमतौर पे ज़्यादा अच्छे से लोड कर लेते हैं सिस्टम्स. और ये भी डिपेंडेंट होता है बेसिकली आपका सिस्टम कैसा है, और जो आपका सॉफ्टवेयर है वो भी इसमें काम कर रहा, मैटर करता है कि डेटा कितने आसानी से लोड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. यही डेटा अगर मैं QGIS में लोड करूँगा तो वहाँ पे इट्स क्वाइट रैपिड, मतलब वहाँ जल्दी से सारी चीज़ें लोड होती हैं एंड इट वर्क्स क्वाइट स्मूथली. ओके, सो अभी हमारे पास मान लीजिए ये वेक्टर डेटा आपने देख लिया, राइट. अब रास्टर डेटा को आपको कन्वर्ट करना है वेक्टर डेटा में. इस केस में आपको मैनुअली ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट. एक आपके पास इमेज है जिसमें से आपको डिस्ट्रिक्ट एक्सट्रैक्ट करना है. सो कोई छोटा सा सिंपल सा डिस्ट्रिक्ट उठा लेंगे, लेट्स टेक दिस. ओके, तो टू डू दिस मुझे एक फीचर क्लास बनाना पड़ेगा GIS में, ठीक है. वो फीचर क्लास बेसिकली क्या करेगा, हम फीचर क्लास बनाते हैं ताकि उसमें एक सर्टेन टाइप ऑफ फीचर या फीचर्स हम स्टोर कर सकें, ठीक है. और फीचर क्लास हमें डिफाइन करना था पहले ही कि वो किस तरह का होगा. तो आर वी गोइंग टू स्टोर पॉइंट्स इनसाइड इट, आर वी गोइंग टू स्टोर लाइंस इनसाइड इट, और आर वी गोइंग टू स्टोर पॉलीगन्स इनसाइड इट, ठीक है. हमें वो चीज़ पहले इन्फॉर्म करनी पड़ती है सिस्टम को. एंड देयर आर मल्टीपल वेज टू गो अबाउट इट, ठीक है. हम आर्क टूल बॉक्स से जाके कर सकते हैं, इनफैक्ट हम आर्क कैटलॉग में भी कर सकते हैं. जैसे हमने ये GDB बनाया था यहाँ पे, राइट. यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा अगर, इसमें न्यू का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम फीचर क्लास बना सकते हैं. एंड फीचर डेटा सेट एक और फॉर्मेट है बेसिकली आर्क GIS का खुद का, है ना, जिसमें आप फीचर क्लासेस स्टोर कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को इस तरह स्टोर करते हैं दैट ईच इन्फॉर्मेशन इज लिंक टू द अदर इन सम वे. ओके, फीचर डेटा सेट जो है, तो
उस पर नहीं जाते हैं, लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स क्रिएट अ फीचर क्लास। तो आप फीचर क्लास यहाँ से बना सकते हैं। जैसे आपने राइट क्लिक करा, यहाँ मान लीजिए किसी फोल्डर पे क्लिक करा, तो फोल्डर पे ऑप्शन दे रहा है देखो फाइल, शेप फाइल का। ओके, किसी फोल्डर पे क्लिक कर रहे हैं हम तो हमें ऑप्शन देगा शेप फाइल का। ओके, और किसी जियो डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें फीचर क्लास का देगा। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि जीडीबी के अंदर वो फॉर्मेट उसका डिफरेंट रहता है। ओके, और जब आप फोल्डर के अंदर नॉर्मल अपने फोल्डर के अंदर स्टोर करेंगे तो उसका फॉर्मेट डिफरेंट होगा। शेप फाइल इस तरह का फॉर्मेट होगा जैसे हमने डाटा यहाँ पे देखा, SHP, SPX इस तरह का होगा। एंड वी आर क्रिएटिंग द फीचर क्लास इनसाइड अ जियो डेटाबेस, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, और वो नॉर्मली हमारा विंडोज़ रीड नहीं कर पाता है। तो अगर मैं कोई जियो डेटाबेस खोलता हूँ, ओके, उसमें आप थोड़े अजीब गरीब चीज़ें देख पाएंगे, समझ नहीं आएगा क्या है उसके अंदर। जैसे ये वाला फोल्डर खोलूँ, इसमें देखो कई सारी चीज़ें हैं, नन ऑफ इट मेक सेंस। ओके, नहीं, तो लेट्स क्रिएट अ फीचर क्लास। तो हम आप टूल बॉक्स से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जैसे सर्च में जाते हैं एंड लेट्स सर्च फॉर फीचर क्लास। ओके, फीचर क्लास, एंड यहाँ पर क्रिएट फीचर क्लास का एक है डेटा मैनेजमेंट टूल्स में, राइट। सो आप चाहे सर्च करके यहाँ से चले जाएं या डेटा मैनेजमेंट टूल्स में जाएं, फिर उसमें फीचर क्लास होगा, इसमें क्रिएट फीचर क्लास। ओके, डबल क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे आप फीचर क्लास बेसिकली बना सकते हैं। यू गिव द लोकेशन, कहाँ पे आप स्टोर करना चाह रहे हैं। तो डेटा मणिपुर का आई बिलीव था, राइट। तो हम ये फोल्डर को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, नाम दे देते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, लास्ट टाइम किसी को प्रॉब्लम आई थी, राइट। तो जैसे आप स्पेस नहीं दीजिए, ओके, अंडरस्कोर दे दीजिए, दिस इज गुड। और हमें अभी बनाना क्या है, हमें एक पॉलीगन्स बनानी है, राइट। हमें पता है पॉलीगन्स बनाने हैं, तो हम जो ज्योमेट्री टाइप चूज करेंगे वो पॉलीगन बनाएंगे। बट सम केसेस अगर हमें रोड मान लो बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, डिजिटाइज करना है, तो उस केस में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, पॉलीलाइन सेलेक्ट करेंगे, राइट। कभी कभी हम मान लीजिए लोग किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट्स रिप्रेजेंट करें, फॉर एग्जांपल लेट्स से लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, तो उस केस में हम उसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। इट डज नॉट मेक सेंस टू रिप्रेजेंट अ हॉस्पिटल विथ लाइन। हम उसको चाहें तो पॉलीगन से रिप्रेजेंट भले कर सकते हैं, बट लाइन्स डू नॉट मेक सेंस टू रिप्रेजेंट अ हॉस्पिटल, राइट। सो हम जब ये स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं या डेटा को डिजिटाइज कर रहे होते हैं, तो वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट मेक्स सेंस फॉर व्हाट टाइप ऑफ डेटा। सो जैसे रिवर आप डिजिटाइज करेंगे तो रिवर में बी रिप्रेजेंटेड बाय बोथ पॉलीलाइंस और पॉलीगन्स, है ना, जो भी फिट कर रहा हो। इनफैक्ट रोड्स के साथ भी यही है कि कभी हम उसको पॉलीलाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और कभी पॉलीगन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें बहुत जूम्ड आउट रख के देखना है, फॉर एग्जांपल इस स्केल पे देखना है, जिस स्केल पे ये मैप है, तो क्रिएटिंग अ पॉलीगन फॉर अ रोड डज नॉट मेक सेंस, राइट। उसको पॉलीलाइन से दिखा दो तो हो जाएगा। बट अगर हम जैसे यहाँ जाते हैं, गूगल मैप्स वगैरह हम खोलते हैं अगर, तो गूगल मैप्स में देखोगे आप, सॉरी मैप्स, है ना, गूगल मैप्स में रोड्स जो हैं वो पॉलीगन्स हैं बेसिकली, एक तरह से देखा जाए तो उसके अंदर थिकनेस और वो दोनों चीज़ें हैं उसमें, राइट। इट्स नॉट सिंपली वन डायमेंशनल लाइन, ये टू डायमेंशनल, इसमें थिकनेस भी है और लेंथ भी है। और वो एक्चुअली आपको पता चल रहा है, जैसे देखो ये थोड़ा चौड़ा रोड है तो दिख रहा है आपको ये कोई मेजर रोड होगा कंपेयर टू दिस, और ये और स्ट्रीट्स हैं पतली, राइट। तो यहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं इनको बिकॉज गूगल मैप्स काफ़ी डिटेल्ड बनाया गया है, तो इस केस में लगभग हर रोड आपका उसी से रिप्रेजेंटेड है। बट जैसे आई डोंट नो, मे भी देखो ये पाथवे है तो इन्होंने डॉटेड लाइन से दिखा दिया है, राइट। तो ये लाइन है, ये पॉलीगन नहीं है इस केस में, सपोज, राइट। तो आप जब डेटा स्टोर कर रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे ताकि आप इंफॉर्मेशन को सही से स्टोर कर सकें। तो हम यहाँ पे जैसे इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स रखना चाह रहे थे, पॉलीगन में रखेंगे। अब नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम जो नया शेप फाइल बनाएंगे हमें उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम रखना है कि नहीं रखना है। तो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं रखेंगे तो वो ग्लोब के ऊपर जो हमारा मॉडल है उसके ऊपर प्लेस नहीं होगा। ओके, देयरफॉर वी नीड टू यूज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें उसको बताना पड़ेगा कि ये जो मैं लाइंस ड्रॉ करने जा रहा हूँ ये अर्थ के ऊपर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ओके, तो हम यहाँ जाएंगे एंड सिंस वी ऑलरेडी हैव अ लेयर loaded into ArcGIS which has a certain coordinate system, right? तो we go to layers and we use that. तो GCS जैसे हमारे पास असल में एक्चुअली देखो यहाँ पे LCC WGS 84 है, ये उसका डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री वाला है। तो देखो दोनों जो डेटा सेट्स हैं ना, जो हमारा रास्टर डेटा है जो हमने सरकार का डाउनलोड करा, और जो दूसरा डेटा हमने जो वेक्टर डेटा डाउनलोड करा बाउंड्रीज वाला, वो दोनों डिफरेंट उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, एंड दैट क्रिएट्स सम प्रॉब्लम इवन दो दोनों लगभग सेम आपका क्या कहते हैं
अर्थ के ऊपर है, बट इफ यू सी एक डेसिमल डिग्रीज है, एक में कहीं लिखा है डिग्री राइट, और एक में मीटर्स आई बिलीव। फॉल्स नॉर्थिंग ईस्टिंग्स जो दिए हुए होते हैं, फॉल्स नॉर्थिंग फॉल्स ईस्टिंग्स, ये नॉर्मली आपका इसके लिए होता है। अच्छा ये भी डिग्रीज में, ओके, बट सिंस दोनों का जो ESP होगा ना, एक मिनट लेट्स सी, ESP डिफरेंट है राइट। इन दैट केस देखो, अगर आप यहाँ पे जैसे WKID 4326 ये EPSG कोड होता है, ये डिफरेंट प्रोजेक्शन पैरामीटर्स के लिए डिफरेंट रहेगा, रेफरेंस सिस्टम्स जो होते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस हमको कन्वर्ट करना पड़ता है दोनों को, मतलब दे माइट नॉट कन्फॉर्म टू ईच अदर परफेक्टली। इन दैट केस हमें एक को कन्वर्ट करके दूसरे वाले प्रोजेक्शन पैरामीटर में कन्वर्ट करना होगा। दैट इज बेसिकली योर रीप्रोजेक्शन, हम उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, GCS WGS 1984 जो जनरली यूज करते हैं इंडिया में, वो ले लेते हैं, ओके। और बेसिकली हम अपना जो अब लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे वो इस वाले अर्थ के ऊपर ड्रॉ कर रहे होंगे, बेसिकली इस मॉडल के ऊपर। तो दूसरा वाला जो है वो दूसरा मॉडल है। लाइक आई सेड, वी कैन हैव मल्टीपल मॉडल्स ऑफ द अर्थ इनसाइड द GIS सिस्टम्स। एंड व्हाई डू वी हैव मल्टीपल मॉडल्स? बेसिकली अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो अपना अलग अलग मॉडल बना के बैठी हैं। इनफैक्ट एक ही कंट्री के मल्टीपल मॉडल्स भी हो सकते हैं, ओवर टाइम उन्होंने इंप्रूव कराया मान लो मॉडल को। द होल गोल इज टू represent the whole of the earth or part of the earth as perfectly as possible, okay, in the digital system. Therefore हमारे पास कई सारे different models हैं earth के लिए, okay. Alright, तो हम फीचर क्लास बना रहे हैं, एक बन गया राइट, ओके। द न्यू फीचर क्लास इज क्रिएटेड। अब हम उसमें लाइक बेसिकली ड्राइंग करने जा रहे हैं, लिटरली ड्राइंग ये है, बट इट इज नॉट लाइक योर नॉर्मल ड्राइंग यू आर गोइंग टू डू इन पेंट, बट ये एक बेसिकली डिजिटल ग्लोब है एक तरह से कह लीजिए, जिसके ऊपर आप ड्राइंग करने जा रहे हैं, ओके। तो आप एडिटर में जाते हैं, एडिटिंग स्टार्ट करेंगे, ओके, एंड देन okay, it's saying start editing encounter one or more layers with warning, you will not be able to edit some. तो it is saying कि इस लेयर में spatial reference does not match data frame, see, तो जो इसका data frame है, stop editing, okay, if you go to data frame properties, data frame हमारा क्या है, WGS 1984 राइट। और जो इसका coordinate system है बेसिकली, जनरल में जाके आप शायद देख सकते हैं, एक मिनट सोर्स में जाके देखते हैं, सॉरी राइट, वो दूसरा है, LCC WGS 84 है। तो देयरफॉर इट वाज गिविंग यू एन एरर कि अच्छा यार देखो, मेक श्योर दैट यू नो कि दोनों सिस्टम्स अलग हैं, एंड आर यू श्योर यू वांट टू वर्क लाइक दिस, ओके। वो बेसिकली आपको इन्फॉर्म कर रहा है। तो आई एम सेइंग कि ठीक है, मेरे को पता है, कंटिन्यू करते हैं हम उसको, अभी मेरे को उससे कुछ करना नहीं है, ओके। तो एडिटर हमने ऑन करा, नाउ देयर इज अ विंडो दैट यू नीड टू ओपन, क्रिएट फीचर्स। सो ये आपका मे बी शो नहीं करेगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, विंडोज नो एडिटर में जाएंगे राइट, देयर यू हैव एडिटिंग टूल्स, यहाँ पे आपका दिखा है एडिटिंग विंडोज, सॉरी, यहाँ पर आपको दिखा है क्रिएट फीचर्स। तो यू क्लिक ऑन दैट, ये आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ये मूव भी कर सकते हैं आप इनफैक्ट। तो इफ आई अनपिन आई कैन मूव राइट, तो आई लाइक टू कीप इट पिन्ड हेयर, यहाँ पे रख के इसको पिन कर देते हैं, ओके। यू हैव टू क्लिक ऑन दैट फीचर। अगर आपके पास मल्टीपल लेयर्स होंगी ना, तो वो मल्टीपल लेयर्स को यहाँ दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा और मैं अगर इसको स्टॉप एडिटिंग करके स्टार्ट एडिटिंग करता हूँ, तो आई एम फेयरली सर्टेन कि वो यहाँ पे दूसरा वाला दिखाएगा। इट इज़ नॉट शोइंग फॉर सम रीज़न, ओके, मे बी बिकॉज इज दैट सो, सी करने दे रहा है क्या, हाँ अच्छा, एक टाइम पे एक लोड करने दे रहा है, बिकॉज मे बी दे आर स्टोर्ड सम अदर प्लेसेस, तो इस वजह से वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है दोनों को एक साथ। इफ आई क्लिक हेयर, ओके, एनीवे एक टाइम पे हम एक ही लेयर पे इस वक्त काम कर पा रहे हैं। तो समटाइम्स वी आर एबल टू वर्क ऑन, और सॉरी एक हमने ये मान लीजिए ये स्टार्ट करा राइट, इसमें मल्टीपल फीचर्स बना सकते हैं जिसमें हम इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, ओके। तो इन इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स, इनफैक्ट आई थिंक वी कैन वर्क ऑन मल्टीपल फीचर्स, बट फॉर सम रीजन वो नहीं आ रहा है, तो एनीवे लीव इट। कभी आप बनाओगे तो मे बी मल्टीपल, अगर हम फीचर क्लासेस बना देंगे अलग से, तो आई थिंक इट शुड वर्क, ओके। तो इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स हमने सेलेक्ट करा, और हम यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। सो वी हैव पॉलीगन, रेक्टेंगल, सर्कल, फ्री हैंड, ऑटो कंप्लीट पॉलीगन, देन ऑटो कंप्लीट फ्री हैंड। सो वी कैन यूज पॉलीगन, लेट्स ट्राई पॉलीगन, ओके। तो यहाँ पे देखोगे आप, आपके पास कई सारे अलग ऑप्शंस हैं। एडिटर वाला कभी कभी आपका नहीं अवेलेबल शो करेगा राइट, तो यहाँ पे खाली स्पेस में राइट क्लिक करके आप एडिटर इनेबल कर लेंगे, ओके। अब आप जाएं एडिटर वाले विंडो में, यू फॉलो द स्टेप्स आई शोड यू गाइज,
then you go to straight segment, and you have curved segments as well. So depending on the type of accuracy you want and the shape of the digitization that you are doing, आप select करेंगे. तो for example मैं यहाँ पे थोड़ा crudely कर रहा हूँ, but just to show मैं zoom in करके दिखा देता हूँ कि कैसे आर्क वाला पार्ट काम करता है. तो जैसे if I have to drop a point, okay, उसके बाद वो hook हो जाएगा दोनों. उसके बाद I need to give the curve, तो मैं curve उसका define करके एक point और drop करूँगा. Okay, this is basically how your arc segment works. अब आप क्या करें, आप बेसिकली क्लिक कर दें. ओके, दिस इज़ वेरी क्रूड, बट व्हेन यू आर वर्किंग विद एक्चुअल डेटा आप काफ़ी अच्छे से करेंगे. तो देयर आर टू वेज टू एंड योर और फिनिश योर ड्राइंग. ओके, you either double left click or you right click somewhere, right, and you say finish sketch. Okay, double clicking also works. For example, it's showing, right, double click or press F2, so F2 also works, double clicking also works, and finish sketch also works. So it has completed your whole shape file. And then अभी यहाँ पे क्या है कि हमने इस केस में क्या करा था कि एक छोटा सिंपल डिस्ट्रिक्ट लिया था, राइट, बट मे बी वी वांट टू कंस्ट्रक्ट द होल, हमें पूरा एरिया लेना है और उसमें हमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी लेने हैं, राइट. तो उस केस में देयर आर टू वेज टू गो अबाउट इट. वी कैन ईदर कट पोर्शंस आउट ऑफ द पॉलीगन और वी कैन ऐड कीप एडिंग टू द पॉलीगन. ओके, तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं. जैसे कटिंग वाला जो मेथड है वो बेसिकली समटाइम्स इट्स रादर सिंपल, तो आप बेसिकली आउटर बाउंड्री कंस्ट्रक्ट कर देंगे. तो लेट्स क्रिएट अ न्यू पॉलीगन. ओके, तो एक लार्जर पॉलीगन बना दे रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि लेट्स से वी आर टेकिंग ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट्स. ओके, ये वाला लार्जर पॉलीगन. तो सवाल ये है कि आपको ये भी सोचते रहना है साथ साथ में कि वाई आर यू डूइंग इट, व्हेन डू वी नीड टू डू दिस, है ना. अलग अलग यूज केसेस में हमारे पास अलग अलग रिक्वायरमेंट है. तो मैंने डबल क्लिक से करा, एक बार मेरा कंप्लीट बन गया, राइट. अभी क्या है, मेरे को बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, ठीक. तो टू डू दैट हम क्या करेंगे, इसको हॉलो कर लेंगे और हम एक ऐसा कलर चूज कर लेते हैं या इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं ताकि वी आर एबल टू सी. नाउ एक बार मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बोला था कि सेलेक्ट फीचर वाला आता है, वो नहीं दिख रहा था उसको क्योंकि बिकॉज वी डिड नॉट हैव एनी फीचर. अब हमारे पास फीचर है तो अब हमारे पास सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है. तो नाउ आई कैन सेलेक्ट दिस फीचर और आई कैन क्लिक समवेयर एल्स एंड नॉट सेलेक्ट इट. तो जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ तो देखो ब्लू हो जा रहा है, ये सेलेक्ट हो गया. अभी देखो ब्लैक है तो कंट्रास्ट नहीं हो रहा है ठीक से. तो लेट्स चेंज द कलर, लेट्स मे बी ट्राई रेड, थिकनेस बढ़ा लेते हैं. ओके, तो ये बड़ा अच्छे से दिख रहा है, राइट. तो क्या ले लें कलर, तो अब क्लियर नहीं है. ब्लैक वर्क्स, ठीक है. तो हमारे पास ये है, ठीक है. अब हमें मान लो कि एक डिस्ट्रिक्ट इसमें से काटना है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि हमें पहले डिफाइन करना होगा कि कौन से फीचर में से मैं कटिंग करने जा रहा हूँ. ओके, तो बेसिकली सेलेक्टेड, आप उसको सेलेक्ट कर लो, राइट. एंड सिलेक्शन हमें कैसे पता है, जो ये स्पेसिफिक कलर है सायान है जो ये जब आप फीचर सेलेक्ट करते हैं, जो फीचर सेलेक्टेड होगा सायान कलर से हाईलाइट हो जाता है. ओके, इसको आप कलर भी चेंज कर सकते हैं बट कौन ही चेंज करता है उसको, सेटिंग्स में जाके आप यही रहने दें. ओके, नाउ यू हैव सेलेक्टेड इट. अब उसमें से आपको कटिंग करनी है. तो यहाँ पे आप जाओगे, जैसे समटाइम्स आपको ऑप्शन नहीं दे रहा होगा ये वाला, तो आप फीचर्स में जाओ और वो क्लिक कर दो उस पर. ओके, देन यू सेलेक्ट लेट्स से पॉलीगन. अब यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास कट पॉलीगन टूल का. ओके, यू क्लिक ऑन कट पॉलीगन टूल. अब आपको बेसिकली कट आउट करना है, तो आप बीच में से भी कट आउट कर सकते हैं, राइट. एंड आप साइड में से कट आउट कर सकते हैं, जहाँ से आपको काटना है वहाँ से काटिए, राइट. अब मान लो मुझे ये डिस्ट्रिक्ट काट के निकालना है इस पॉलीगन में से टोटल, तो मैं एक पॉइंट बाहर लूँगा, राइट. एंड देन मैं इसको ऐसे बाहर दूसरा कट भी लेके आ जाऊँगा. सो हसन सर यूजुअली वांट्स टू डिस्क्राइब दिस एज इफ वी आर कटिंग अ क्लॉथ. ओके, हम बाहर से शुरू करते हैं और बाहर ख़त्म करते हैं. तो काफ़ी इंट्यूटिव है कि हाँ, इट मेक सेंस कि हमने बाहर से शुरू करा और क्लॉथ बाहर करके रख दिया. बट इन फैक्ट आप अंदर के पोर्शंस को भी काट सकते हैं, राइट. बट समटाइम्स द जियोमेट्री इज समहाउ नॉट सॉल्वेबल, तो कैलकुलेशंस नहीं कर पाता है इन सम केसेस और तब कटिंग नहीं करता है. बट इनसाइड भी आप पॉलीगन काट सकते हैं. ओके, तो अब हम बाहर पॉइंट हमारे पास राइट क्लिक करा, हमने फिनिश स्केच कर दिया. सो लेट्स इनफैक्ट ट्राई इफ दिस वर्क. समटाइम्स आई हैव ट्राइड, हो भी जाता है इन कुछ केसेस में और कुछ केसेस में नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू कट आउट दिस. लेट मी डू इट. हाँ देखो कर दिया, राइट. सो मैं इसको, ये अलग इंडिपेंडेंट एक पॉलीगन हो गया और इसके अंदर एक दूसरा पॉलीगन हो गया, राइट. वो एक उसने अलग पॉलीगन बना दिया है.
ओके, बट मैं जब इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो दोनों सेलेक्ट कर ले रहा है क्योंकि उसको उसके अंदर है वो, है ना। बट दीज आर नाउ यू हैव 2 पॉलीगन्स, तो आप उसके अंदर भी कटिंग करके रख सकते हो। ऑलराइट, नाउ तो बेसिकली आपका जो वेक्टर जो बनाने का है फंडा वो यही है कि आपने कोई एक सर्टेन टाइप ऑफ रियल वर्ल्ड फीचर देखा, उसको आप डिजिटाइज कर रहे हैं वेक्टर फॉर्मेट में। ओके, रास्टर्स आप नहीं बनाते हैं, नॉर्मली खुद नहीं बनाते हैं, वो सैटेलाइट इमेजेस ही यूज कर रहे होते हैं। रास्टर जो डेटा है वो यूजुअली सैटेलाइट इमेजेस ही होगा, बट कभी कभी हम मैप्स भी यूज करते हैं। जैसे ये हमने जो यूज करा है ये टोपो शीट है, राइट, तो ये एक तरह का मैप हो गया। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, आदत बना लो कि वेन एवर यू आर डिजिटाइजिंग यू सेव योर एडिट्स एंड देन यू एट द एंड स्टॉप एडिटिंग। तो थोड़े थोड़े इंटरवल पे एडिट सेव कर लिया करो, बिकॉज ArcGIS हैज अ टेंडेंसी टू क्रैश समटाइम्स इन सम सिस्टम्स, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, तो यू सेव योर एडिट्स। ओके, एंड फाइनली हम एडिट बंद कर देंगे। ओके, सो अभी हमने क्या काम करा है कि हमने वेक्टर डेटा बना लिया है, राइट। तो ये तो खैर काइंड ऑफ यूजलेस है, तो हम इसको अभी फिलहाल हटा देते हैं। एक डेटा ये है सरकार का, जो उन्होंने पूरा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया बना रखा है। ओके, नाउ हमने क्या करा था, हमने यहाँ से सेंसस डेटा डाउनलोड करा है क्या? सेंसस डेटा मेरे पास इनफैक्ट पड़ा हुआ है बिहार का, तो सेंसस डेटा हम कहते हैं, राइट, ऐसे टेबल्स हैं, राइट, यू कैन गो एंड डाउनलोड, आई शोड यू हाउ टू डाउनलोड, राइट, क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। अभी आपको क्या करना होता है ना कि वो डेटा को आपको इंटीग्रेट करना है इसके साथ, इस मैप के साथ। सो अगर आप यहाँ जाएंगे राइट क्लिक करके ओपन एट्रीब्यूट टेबल में, अच्छा इंडिया डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री में। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि इस ऑलरेडी मैप के साथ जो हमने SY के साथ डाउनलोड करा था उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने क्या दे रखा है, शेप का लेंथ दे रखा है, शेप का एरिया दे रखा है, और स्टेट का नाम दे रखा है और डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रखा है, राइट। इसमें कुछ कुछ थोड़े थोड़े इश्यूज हैं डेटा में। भवनगर में जैसे कुछ कुछ ए को पता नहीं कैसे सिंबल्स आ रहा है, तो ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट एक यूनिक आइडेंटिफायर भी रहता है डेटा के साथ। डेटा सी इसमें है कि नहीं, इस वाले डेटा में यूनिक आइडेंटिफायर बस नाम है। तो इनफैक्ट आई डाउनलोडेड वन डेटा जिसमें हमारे पास रॉ डेटा में आई बिलीव होना चाहिए इंडिया डिस्ट्रिक्ट, ये भी उसी की वेबसाइट से इनफैक्ट करा था मैंने, ये कोई दूसरा है। ओके, इसमें इन्होंने क्या करा है कि इस वाले डेटा में इन्होंने स्टेट कोड्स, डिस्ट्रिक्ट कोड्स ऐसे दिए हुए हैं। ओके, ये भी उसी वेबसाइट से ही था आई बिलीव, ठीक है। तो ये कोई दूसरा डेटा सेट रहा होगा, वही टोपो जो मैं बता रहा था 4 ना, उसमें कोई दूसरा वाला रहा होगा ये पॉसिबली। तो इसमें देखोगे कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोड्स हैं, यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं बेसिकली हर एक डिस्ट्रिक्ट का, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट इंडिया का जो है उसको एक यूनिक नंबर दिया हुआ है। एंड अगर हम इसको ऑर्गेनाइज कर लें, डबल क्लिक करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में, तो इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट दे रहा है, 640 प्लस सम तेलंगाना में कुछ एडिशनल अलग से दे रहा है। ओके, तो इतने इंडिया में डिस्ट्रिक्ट्स हैं अभी आपके पास, ये जब का भी डेटा है अवेलेबल है। तो सरकार ने बेसिकली जो लेटेस्ट डेटा पब्लिश करा रखा है वो ये है। ओके, देन अभी हम क्या करेंगे, जो सेंसस डेटा हमारे पास हम उसके साथ इसका इंटरफेस कराएंगे। तो लेट्स गो, बिहार के लिए हमने कुछ डेटा बनाया था, आई डोंट नो, मैंने क्लीन आउट नहीं करा है। तो ये बिहार बेसिकली हमने एक्सट्रैक्ट करा था, तो ये पार्ट भी आपका उसमें एक्चुअली उसमें आएगा व्हेन यू आर हैंडलिंग एट्रीब्यूट डेटा। बट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि जैसे मैं, ये इंडिया है राइट पूरा, अब इसमें से मुझे क्या करना है, लेट्स से सिर्फ दिल्ली एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो मैं अगर एट्रीब्यूट टेबल में जाता हूँ, ओके एट्रीब्यूट टेबल में जाता हूँ मैं, एंड आई गो टू स्टेट नेम, ओके एंड आई स्क्रॉल, देयर आर मल्टीपल वेज टू, जैसे सीक्वल आप बोल रहे थे ना कि क्वेरीज नहीं कर सकते, देयर आर वेज टू, सॉरी क्वेरी कर सकते हैं राइट। इसमें यू कैन ऑल्सो मेक अ क्वेरी, है ना, एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करके, और यू कैन मैनुअली, ऑब्वियसली ये डेटा सेट छोटा है तो इसमें मैनुअली जाके ढूंढ सकते हैं, जैसे एनसीटी ऑफ दिल्ली है राइट। तो यहाँ पे हमने एनसीटी ऑफ दिल्ली को सेलेक्ट कर लिया। अब आप क्या देखेंगे कि ये एक्चुअल जो मैप है इसमें भी एनसीटी ऑफ दिल्ली सेलेक्टेड है। ओके, तो एनसीटी ऑफ दिल्ली हैज बीन सेलेक्टेड। नाउ आप उसको अलग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, सिलेक्शन हो गया है, आप राइट क्लिक करेंगे, डेटा में जाएंगे, एक्सपोर्ट डेटा में जाएंगे, तो यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट में दे रहा है सिलेक्टेड फीचर राइट।
आप सिलेक्टेड फीचर सेलेक्ट करके, जैसे ऑल फीचर्स भी दे रखा है, ऑल फीचर्स इन व्यू इवेंट, तो आप सिलेक्टेड फीचर अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो विच एवर ऑफ द फीचर्स दैट यू हैव सिलेक्टेड वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा एक दूसरे बेसिकली डेटा सेट में। तो आप उसकी लोकेशन दे दें, आप उसका नाम दे दें, राइट, यहाँ से जाके लोकेशन और नाम डिफाइन कर दें और ओके कर दें, वो डेटा एक्सपोर्ट हो जाना है आपका। तो हमने यहाँ पे जैसे बिहार को एक्सपोर्ट कर रखा था। ओके, तो जूम इन टू द लेयर। अब बिहार के साथ आप देखेंगे कि अभी भी वो डेटा इंटैक्ट है। जैसे एट्रीब्यूट टेबल में खोलता हूँ तो उसमें उसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के कोड हैं, उसके डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं, डिस्ट्रिक्ट का एरिया, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ यहीं पे दे रखा है। बट मे बी आई वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बिहार और ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जैसे टोटल पॉपुलेशन, टोटल एच समथिंग है, टोटल पॉपुलेशन मेल है, टोटल पॉपुलेशन फीमेल है, ऐसे चाइल्ड डू नॉट नो क्या है। तो इसके लिए आपको बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करना पड़ेगा। ओके, तो अभी क्या है कि हम चाह रहे हैं कि और जो यहाँ का डेटा है बिहार का वो ले आए। तो व्हाट काइंड ऑफ डेटा डू वी हैव फॉर बिहार? वी हैव लेट्स से बिहार हमारे पास सेंसस। ओके, तो वी हैव नंबर ऑफ विलेजेस, टाउन्स, हाउस होल्ड्स, पॉपुलेशन एंड एरिया, देन दिस वाज व्हाट वाज इट, दिस इज आर मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर, ऐसे ये वर्कर्स का हमारे पास एक डेटा सेट है। फिर हमारे पास क्या है और हमारे पास जी, ये हमारे पास एजुकेशनल लेवल बाय एज है। तो हम बेसिकली यहाँ पे हमारा मान लीजिए गोल है कि हम मैपिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, बिहार के अलग बिहार एरिया के लिए हम उसके अलग अलग जो हमारे पास सोशो इकोनॉमिक फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स या फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं बिहार के लिए, हम उसका एक मैप बनाना चाह रहे हैं और कोई एनालिसिस करना चाह रहे हैं, चाहे विजुअल एनालिसिस हो, चाहे कोई हम स्पेशल टाइप के स्पेशल एनालिसिस टूल यूज़ करके कुछ एनालिसिस करना चाह रहे हो, ठीक है। बट बेसिकली हम उसको अभी चाह रहे हैं कि कनेक्ट कर लें डेटा को अपने जीआईएस सिस्टम में। तो इसमें एक फीचर है आपका जॉइन का, ओके, ताकि आप क्या करें कि जैसे इसमें हमारे पास कुछ एक फीचर है, राइट, फॉर एग्जांपल दिस फीचर, राइट। अब अगर हम इधर जाते हैं एट्रीब्यूट टेबल में तो सर्टेन फीचर वुड हैव बीन सेलेक्टेड, यहाँ पे देखो सेलेक्टेड है, राइट। तो ऐसे उस फीचर के लिए हमारे पास कई सारी इन्फॉर्मेशन है। ये पश्चिम चंपारण है फॉर एग्जांपल, अब मुझे इसके साथ पश्चिम चंपारण के साथ और भी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो इफ़ यू सी यहाँ पे जैसे डिस्ट्रिक्ट कोड है, राइट, डिस्ट्रिक्ट कोड 203 है। अगर मैं मान लीजिए इधर जाता हूँ, ओके, यहाँ पर आ रहा हूँ मैं और मैं देखो पश्चिम चंपारण के लिए जाता हूँ, ये वाला कॉलम डिस्ट्रिक्ट कोड का है, ओके। इफ़ यू सी पश्चिम चंपारण के लिए 203 ही कोड यहाँ भी यूज़ हो रहा है। तो नाउ व्हाट वी हमारे जीआईएस में क्या एक पॉसिबिलिटी है कि वी कैन नाउ लिंक दीज टू, है ना। अगर दोनों के पास एक ऐसा कॉलम है जिसमें सेम वैल्यूज़ हैं, राइट, तो हम दोनों को लिंक कर सकते हैं। और अगर आप वेरीफाई करेंगे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, जैसे इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट का शेप फाइल जो है, राइट, उसके साथ एक एसोसिएटेड वो है, डिस्ट्रिक्ट कोड है। और जो हमारा सेंसस डेटा है उसमें भी इनफैक्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट कोड है जो मैच कर रहा है आपके SOI वाले एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के साथ। ओके, सो यू कैन मर्ज देम, ओके, ब्रिंग देम टुगेदर, इंटीग्रेट कर सकते हो दोनों को। तो उसके लिए लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे इस डेटा में हमारे पास जो हेडिंग्स है ना वो प्रॉब्लमैटिक है थोड़ी सी, ओके। तो हमें ये हेडिंग्स एडिट करनी पड़ेंगी। तो एक थोड़ा सिंपल सा डेटा बना लेते हैं, मे बी लेट्स कॉपी क्रिएट करते हैं, ठीक है, इनेबल एडिटिंग, लेट मी ब्रिंग दिस, एक्चुअली ये उठा लेते हैं, ये वाला, राइट। फिर डिस्ट्रिक्ट कोड ले लेते हैं, ये उठा लेते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से उठा लेते हैं फॉर एग्जांपल, राइट। तो आपको डेटा खुद बनाना आ जाना चाहिए, राइट। मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ से उठा के रख ले रहा हूँ। एज ग्रुप, पॉपुलेशन, हेडिंग्स हमें बेसिकली इसकी एडिट करनी है, डिलीट करना है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उसको रीड करने में प्रॉब्लम होगा। व्हाट इज द फील्ड नेम, है ना, इस केस में फील्ड नेम में कंफ्यूजन होगा क्योंकि इतने सारे मल्टीपल लेयर्स हमारे पास। तो फील्ड नेम कौन सा, आई डोंट नॉट नो। तो फॉर एग्जांपल ऐसा करते हैं, पहले ना एक बार ट्राई करते हैं कि क्या पता वो खुद ही अंडरस्टैंड कर ले जा रहा हो कि फील्ड नेम है कौन सा। तो हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ जॉइंस में जाएंगे, जॉइन में जाएंगे, ओके, एंड वी बेसिकली लुक फॉर चूज अ टेबल टू जॉइन, है ना। तो हम जाते हैं और वो टेबल ढूंढते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बिहार में मेरे पास है वो, तो लेट्स से हम इस वाले टेबल में हमारे पास क्या है,
हर डिस्ट्रिक्ट का कोड है, डिस्ट्रिक्ट का कोड है, ओके, एंड वी हैव दिस इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मैं डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया ले रहा हूँ, ओके। फेल टू कनेक्ट डेटाबेस एंड अंडरलाइंग डेटाबेस एरर अकर्ड, क्लास नॉट रजिस्टर्ड, ओके। अच्छा, अच्छा ये देखो फॉर्मेट का लिमिटेशन देखो, यहाँ पे हमारे पास XLSX फॉर्मेट में है या XLS फॉर्मेट में, तो मे बी XLS के साथ कंपैटिबिलिटी है, ओके। XLS के साथ कंपैटिबिलिटी आई बिलीव, बट XLSX के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है ArcGIS की, CSV के साथ है। तो ArcGIS Pro जो नया वाला है उसमें XLSX के साथ कंपैटिबिलिटी है, बट ArcGIS जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, इसमें कंपैटिबिलिटी नहीं है XLSX फॉर्मेट के साथ। तो पुराना वाला XLS जो था पहले वाला वो सपोर्ट करता है आई बिलीव, और CSV फॉर्मेट्स करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास XLSX फॉर्मेट में, तो नो वरीज, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं CSV में। तो लेट्स ट्राई दिस, XLSS में हो पा रहा है कि नहीं, आई बिलीव हो पा रहा है। तो इसको, इस लेयर को लेते हैं, एंड नाउ लुक फॉर फील्ड्स। तो अब देखो इसमें इसने पूछा है कि आप जो लेयर ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे मैप है, राइट, जो स्पेशल डेटा है, उसका कौन सा फील्ड यूज करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए मैं डिस्ट्रिक्ट कोड यूज करना चाह रहा हूँ। अब मैं चूज द फील्ड इन द टेबल टू बेस द जॉइन ऑन। अब मैं अगर इधर जा रहा हूँ तो देखो मेरे पास जो इस डेटा सेट में जो पहला कॉलम है या पहले कुछ कॉलम्स हैं, उसको वो मान रहा है। व्हाट हैपेंड? वेरी वियर्ड। मेरा पॉइंटर ही गायब हो गया। ओके, ऑलराइट, चलो इससे कर लेते हैं। तो अगर मैं राइट, तो जैसे इस केस में हमारे पास क्या था कि जो ऊपर वाले कॉलम्स हैं, राइट, ये रोज हैं, उसमें हमने जो टाइटल दे रखा है अलग अलग, राइट। यहाँ पे देखो जैसे 1 2 3 4 5, तो मे बी इट इज रजिस्टरिंग दीज एज द टाइटल्स, विच इन फैक्ट दे आर नॉट, है ना, है भी मे बी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ जाते हैं और हम देखते हैं कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोड के लिए थर्ड कॉलम है, राइट। तो लेट्स सी, यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं बिहार डिस्ट्रिक्ट में, राइट, और ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो लेट्स सी डिस्ट्रिक्ट कोड, हम जो हमारा शेप फाइल है उसमें डिस्ट्रिक्ट कोड, ठीक, और हम क्या सेलेक्ट करें, B01 है उसका नाम, और हम यहाँ से है क्या हमारे पास F1 F2 F3 करके है हमारे पास। यहाँ पर क्या है हमारे पास, F1 F2 F3 करके है क्या हमारे पास 28। सो दिस डज नॉट मेक सेंस, है ना। हम यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, ओह इट एक्चुअली डज मेक सेंस, ठीक है, F1 F2, तो मे बी लेट्स ट्राई F3 है ना हमारे पास, वो दिस इज F3 डिस्ट्रिक्ट कोड, ओके। तो लेट्स ट्राई टू यूज दैट, अभी पता जाएगा। तो यहाँ पे जॉइन ऑप्शंस, कीप ऑल रिकॉर्ड्स हम रखना चाह रहे हैं, ठीक है, वैलिडेट जॉइन इनफैक्ट कर लेते हैं एक बार। तो अब ये कह रहा है कि चेक फॉर फील्ड नेम्स दैट स्टार्ट विथ एन इनवैलिड कैरेक्टर, इसने कर लिया। चेक फॉर फील्ड नेम्स, तो इसमें कुछ एरर्स क्या आ रहे हैं, फील्ड नेम्स कंटेनिंग इनवैलिड कैरेक्टर्स कैन कॉज द जॉइन टू फेल फॉलोइंग, मेन वर्कर मार्जिनल वर्कर फ्रॉम कंटेन्स इनवैलिड कैरेक्टर्स। तो कुछ कैरेक्टर्स वो रीड नहीं कर पा रहा है जिसमें वो एरर दे रहा है, बट द नंबर ऑफ मैचिंग रिकॉर्ड्स फॉर जॉइन 38 ऑफ द 38 रिकॉर्ड्स मैच्ड। नाउ लेट्स ट्राई, कह रहा है कि 38 आउट ऑफ 38 आर मैचिंग, है ना। अब इस डेटा सेट में इनफैक्ट हमारे पास और ज्यादा है ना, हमारे पास मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, बट जो हमारा शेप फाइल है उसमें सिर्फ 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो वो कह रहा है कि 38 के 38 मुझे मिल गए हैं, तो हम इसे क्लोज कर दे रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं, ओके। नाउ अब अगर आप जाके एट्रीब्यूट टेबल में देखोगे तो अभी देखो आपके पास सारे आ गए, बहुत सारे आ गए। द प्रॉब्लम हियर इज कि हमें अभी बार बार उसको रिफर करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमने इसमें जो हेडिंग इसने ली है वो ये वाली ली है, सॉरी नॉट दिस वन, इसकी इसने हेडिंग्स जो ली हैं ये वाली ली हैं, राइट, एंड उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे ऐसे केस में, हम पहले मॉडिफाई कर लेंगे उस डेटा को, उसका टाइटल बदल लेंगे इधर, या फिर हम रिफर करते रहेंगे ऑब्वियसली बैक टू बैक बार बार, ओके। तो इस केस में मेरे लिए इजी था कि मैं उसको मर्ज करा दूं और उसको हम बार बार रिफर कर लेंगे, ओके। तो अब हमारे पास देखो कि उसने हर एक डिस्ट्रिक्ट को सही डिस्ट्रिक्ट के साथ मर्ज करा है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे पुराना डेटा था, वो पुराना जो टेबल होगा वो पहले रहेगा, उसके बाद जो हमने एडिशनल उसमें ऐड करा है वो उसके राइट साइड में ऐड होता है। तो अब हमारा पुराना डेटा था शेखपुरा, राइट, वो किस डिस्ट्रिक्ट के साथ मैच हुआ है, शेखपुरा के साथ, और उसका डेटा आगे अवेलेबल है, राइट। ऑब्वियसली F1 रिप्रेजेंट्स समथिंग, सो फॉर एग्जाम्पल F5 F7 F8 अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अगर हम यहाँ जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल
लेट्स से इस टेबल में आते हैं, इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, देखो ना इतना सारा डेटा है, इट मेक्स क्वाइट अ मेस। ओके, तो फॉर एग्जांपल जो F8 है वो क्या है, पॉपुलेशन, राइट, पर्सन्स एंड मेल्स एंड फीमेल्स, तो ये पॉपुलेशन है। फिर मेन वर्कर्स जो है, कोई डेफिनेशन होगी मेन वर्कर्स की, राइट, जो सेंसस ने किसी तरह मेन वर्कर्स को डिफाइन करा होगा, जिसमें टोटल पर्सन्स कितने हैं मेन वर्कर्स में जो आ रहे हैं, मेन वर्कर्स मेल्स कितने हैं और फीमेल्स कितनी हैं, राइट। फिर उसने मार्जिनल वर्कर्स को डिफाइन कराया, तो वर्क फॉर लेस देन 3 मंथ्स, वर्क फॉर 3 to 6 months, तो उसको उसने स्टोर कर रखा है इनफैक्ट, ठीक है। फिर नॉन वर्कर्स हैं, उनको स्टोर कर रखा है। अभी देखो कि हमने एक टेबल मर्ज करा था, राइट। अभी if we want we can merge in fact multiple tables, okay। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक दूसरा जो टेबल है मैं उसको भी मर्ज करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रिक्ट कोड ही यूज़ करूँगा, ठीक है। और मैं बैक जाके कौन सा वाला यूज़ करा था, ये वाला था क्या, फील्ड, अच्छा ये देखो फॉर्मेट XLSX है, तो ये नहीं सपोर्ट कर रहा है, बट दिस शुड सपोर्ट। लेट्स ट्राई, इसमें शीट 1 में होना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, कौन सा डेटा था ये वाला, लेट्स गो वेरीफाई, XLSX खोलते हैं ये, और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, लेट्स सी, इज लॉग फॉर एडिटिंग बाय रहमान खान, ओके, रीड ओनली, लेट्स सी। ये है मेन वर्कर क्लासिफाइड बाय एज इंडस्ट्रियल कैटेगरी सेक्स, तो इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है, कल्टिवेटर्स, एज, एग्रीकल्चरल लेबर, तो इसमें क्लासिफिकेशन दूसरी तरह कर रखी है, राइट। इसमें दूसरी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, लेकिन अभी भी देखो डिस्ट्रिक्ट कोड आपके पास अवेलेबल है इसमें, राइट। और डिस्ट्रिक्ट कोड इज स्टिल द सेम, पश्चिम चंपारण के लिए 203, दैट टेल्स अस कि हम इसको भी मर्ज कर सकते हैं अपने उस डेटा सेट के साथ। तो ये कौन से कॉलम में था भाई, अभी भी 3 है, तो देखोगे कि गवर्नमेंट डेटा अक्सर कंसिस्टेंट होता है, तो सेंसस जो है कंसिस्टेंट है, मतलब अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड कॉलम 3 तो यहाँ भी 3 था, बट ऑब्वियसली ऑलवेज चेक, तो अभी हम F3 चूज कर लेते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोड को हम F3 से मर्ज कर रहे हैं, ओके। कीप ऑल रिकॉर्ड्स वी कैन वैलिडेट एज वेल और वी कैन स्किप दिस। तो अभी उसने बोल दिया कि भाई मुझे मिल गए, जैसे यू रीड दीज, अक्सर क्या करा करो, चेक कर लिया करो क्या एरर दे रहा है, बिकॉज मुझे पता है कि नहीं प्रॉब्लम हुई है, तो आई एम नॉट चेकिंग इट, बट ऑलवेज चेक। अभी देखो इसने क्या बोला, 38 ऑफ 38 रिकॉर्ड्स मैच, सो ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट वाज इन द स्पेशल हमारे डेटा में वो सारा उस टेबल में भी अवेलेबल है, तो हमें बता रहा है, ओके। अब उसको ओके कर दे रहे हैं। नाउ इन बिहार डिस्ट्रिक्ट हमारे पास वो वाला डेटा भी इनफैक्ट इसी टेबल में आ गया। तो यूजुअली यू आर नॉट वर्किंग विद सो मच डेटा, बट समटाइम्स यू मे नीड टू वर्क विद दीज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा जो आप एक साथ लाके मर्ज करें। तो मैंने पहले बताया था ना पिछली क्लास में कि हम इंटरफेसिंग करते हैं, मर्ज करते हैं डेटा को कई सारा इसमें GIS में। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू आर मर्जिंग स्पेशल डेटा एंड नॉन स्पेशल डेटा और एट्रीब्यूट डेटा टुगेदर, है ना। सेंसस डेटा उठाया हमने, वो मर्ज कर दिया SOI के एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के साथ, ओके। अब इस बेसिकली डेटा का आप काम क्या करेंगे, आप इससे मैप्स बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, राइट। सो लेट अस क्रिएट अ मैप। तो बिहार डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी मैप है ही आपके पास एक तरह से देखा जाए तो, राइट। बट अब कोई इन्फॉर्मेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे सामने वाले को, ऑलराइट। अरे यार मैंने काफी लंबा खींच दिया एंड आर यू गाइस हियर? जी भैया। यस भैया, सॉरी, भैया तो हम जल्दी 10 से मेरी एक और मीटिंग है, सॉरी, तो मैं लिख रहा हूँ, बाकी रिकॉर्डेड आप भेज देना, मैं उसमें देख लूंगा, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो मैं क्विकली ऐसा करते हैं, फिर अल्लाह सिंबोलॉजी लेट अस हाफिज। लुक समटाइम एल्स, ओके। आई थिंक ये काफी ठीक ठाक hefty हो गया ऑलरेडी। व्हाट डू यू से? एज यू विश भैया। जी भैया। सिंबोलॉजी कभी और देखते हैं, ओके। सो बेसिकली हमने आज क्या करा है, हमने कई सारे अलग अलग तरह के जो सोर्सेज होते हैं डेटा के हमने देखे, सैटेलाइट डेटा और वेक्टर डेटा, राइट, एंड इनफैक्ट एट्रीब्यूट डेटा हमने वो उठाया। हमने कुछ इनफैक्ट स्पेशल डेटा क्रिएट भी करा, और हमने एट्रीब्यूट डेटा भी देखो, जैसे हम एक्सेल शीट्स बना सकते हैं, राइट। ये एक्सेल शीट गवर्नमेंट ने बनाया, हम अपनी एक्सेल शीट भी बना सकते हैं, तो हम एट्रीब्यूट डेटा भी बना सकते हैं, हम स्पेशल डेटा भी खुद का बना सकते हैं। इनफैक्ट ऑलरेडी अगर कोई डेटा एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको भी लाके यूज कर सकते हैं, है ना। हर चीज़ हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो बट टू लर्न हमें मतलब बेसिकली इनिशियली इस फीचर क्लासेस बना लेने चाहिए, समझ आ जाए, ताकि कि अच्छा कैसे बनता है, राइट। बट इन आगे जाके यू वोंट बी नीडिंग टू क्रिएट शेप फाइल्स दैट ऑफन। आम तौर पे आप दूसरों का डेटा डाउनलोड करके यूज कर लेंगे, बट ऑब्वियसली वो रिलायबल डेटा होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ वो किसी एक ऐसे सोर्स से आ रहा है जो रिलायबल है। तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इज ऑब्वियसली द मोस्ट रिलायबल, तो आप उनका डेटा यूज कर रहे हैं,
ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ सैटेलाइट डेटा देखा, कुछ स्पेशल डेटा देखा बेसिकली रास्टर फॉर्म में, और कुछ वेक्टर फॉर्म में, और कुछ हमने एट्रीब्यूट डेटा देखा, राइट। तो नेक्स्ट टाइम हम सिम्बोलॉजी वगैरह बना के देखेंगे। एंड काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, रिप्रोजेक्शन नहीं दिखा पाया, बट नेक्स्ट टाइम हम रिप्रोजेक्शंस भी देखेंगे कि कैसे, जैसे हमने देखा था ना, दो फॉर्मेट्स, दो अलग हमारे पास डेटा सेट्स दो अलग फॉर्मेट में थे। जैसे हमारा जो जियो रेफरेंसिंग हमने करा था वो हमने GCS 1984 में करा था, और जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री सरकार वाली है वो किस में है, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो LCC WGS 84 है। अब इसमें कुछ डिफरेंसेस होंगे, ओके, जो हमें बेसिकली रेक्टिफाई करना है, वो चेंजेस को ऐसा करना है कि वो दोनों मैप जो है एक ही ग्लोब के ऊपर आ जाए। तो उसके लिए हमें कुछ, हमको कुछ नहीं करना है, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर करेगा, हमें बस 2-4 स्टेप्स करने होते हैं, इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है। तो विल लुक एट दैट। हाँ भाई, भैया जो ये वाली शेप फाइल थी आप ये शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? मैं एक्चुअली डाउनलोड कर रही थी वहां से, तो पासवर्ड में एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? वो जैसे आपने, अब पासवर्ड का एरर आ रहा है। पासवर्ड का एरर आ रहा है, तो ट्राई, मैं भेज तो दूंगा, बट ट्राई टू डाउनलोड इट, क्योंकि ये सोर्सेज को यूज करना भी मतलब एक, क्या होता है ना कि यूजर इंटरफेसेस चेंज होते रहते हैं। ओके, जैसे मैंने अभी जब डाउनलोड करा ना, तो इट चेंज्ड अगेन, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने जब विजिट करा था ये सोर्स, तो थोड़ा UI डिफरेंट था। तो मे बी नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा अच्छे से दिखा दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, और डेटा तो मैं भेज ही दूंगा ऑफकोर्स, राइट। बट आप क्या करें कि कोशिश करें कि आप खुद भी ये सोर्सेज को जाके एक्सप्लोर करें। ओके, डेटा मैं भेज दूंगा। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू I have भैया। one doubt actually. हाँ भैया विजय बताएं। हाँ, मुझे एक्चुअली उधर डाउट हो रहा था कि जब हम लोग वेक्टर डेटा गवर्नमेंट का मतलब डाउनलोड कर रहे हैं एंड आर्क पे लेके आ रहे हैं, एंड मतलब एक वेक्टर के ऊपर हम लोग एक और वेक्टर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, श्योर, एंड जैसे हम लोग QGIS में कैसे उसको स्नैपिंग से पूरा वो डिस्ट्रिक्ट को मतलब कॉपी कर पाते हैं बहुत इजीली, तो वैसे ही हम लोग आर्क में कैसे कर सकते हैं? आई एम नॉट सो श्योर आर्क में कैसे कर पाएंगे उसको। कभी हमने ट्राई नहीं करा है कि वेक्टर डेटा को क्या कहते हैं बेसिकली बाउंड्री को, बट स्नैपिंग का एक ऑप्शन इसमें भी होता है, बट आई डोंट थिंक वो बहुत परफेक्ट आपको करके दे देगा। तो आप उस केस में क्या करेंगे कि आप अगर ऑलरेडी आपके पास वेक्टर डेटा अवेलेबल है, राइट, तो आप क्यों उसको मैनुअली डिजिटाइज करेंगे, आप सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बिहार आप एक्सपोर्ट कर ले रहे हैं, इसमें होल मैप था, राइट, आपके पास, सॉरी, एक आपके पास इंडिया का होल मैप है, ओके, और आपके पास, आपको बिहार उसमें से एक्सपोर्ट करना है, राइट। आपको जो डिजिटाइजेशन करना पड़ रहा है बेसिकली, आप उसका कोई एक एरिया कट आउट कर रहे हैं, उस केस में आप उस एरिया को सेलेक्ट करके उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। वुड दैट सॉल्व योर प्रॉब्लम? एक्चुअली चलो ठीक है, ये तो कर लेंगे, बट फिर जब मैं ऐसे गवर्नमेंट का डेटा लेकर आके काम करता हूँ तो मैं एट्रीब्यूट पे जाकर फिर उसे एकदम ही एडिट नहीं कर पाता हूँ, वो एट्रीब्यूट पे पूरा सेट हो जाता है एज इफ अब मैं उसमें कोई डेटा और ऐड नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ भी नहीं कर पाता हूँ उसके बाद। यू कैन सो फॉर एग्जांपल आई कैन शो इट टू यू। तो बिहार वाले इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये टेबल है, राइट। अब इसमें चाह रहा हूँ कि एडिशनल एट्रीब्यूट ऐड करना चाह रहा हूँ, राइट, या एडिट करना चाह रहा हूँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, या राइट। सो उस केस में आपको क्या करना है ना, आप एडिटर पे जाएंगे, राइट, एंड यू स्टार्ट एडिटिंग, ओके, और वो आउटपुट वाली लेयर जिसका टेबल आपको एडिट करना है बेसिकली, उसको सेलेक्ट कर लें और ओके कर दें, ठीक है। वो अभी भी एरर दे रहा है, वो जो हमारा एक लेयर दूसरे रेफरेंसिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें फील्ड ऐड कर सकते हैं, इनफैक्ट एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं अगर डबल क्लिक करूँगा, देखो ये एडिटेबल हो गया, राइट। जैसे 6.1 है, मैं 6.2 कर सकता हूँ इसको, हो गया ना। तो हमें हमेशा ऐसे ही आउटपुट करके मतलब ये अलग से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और फिर जाके हम लोग कर पाएंगे, तो डायरेक्ट मेन डेटा सोर्स से नहीं कर सकते? लाइक आई डू नॉट अंडरस्टैंड मेन डेटा सोर्स से मतलब, जैसे आपने डेटा तो डाउनलोड कर लिया, राइट, आपके पास लोकली मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री का पूरा इंडिया का करके रखा है, तो वहां से हम लोग डायरेक्ट ऐसा एडिट वगैरह नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अभी मतलब एडिटिंग कर रहा हूँ आउटपुट, ये जो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री जो डाउनलोड की थी, राइट, उप्स, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री मैंने बेसिकली, मेरे पास पूरा वही डेटा है जो सरकार का था, राइट, ओके। अब मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, मैं जाता हूँ और इसको मुझे एडिट करना है, इसके एट्रीब्यूट्स को एडिट करना है, राइट। तो उसके लिए यस, मुझे एडिटर ऑन करना पड़ेगा। जब भी मुझे एट्रीब्यूट में स्पेशल डेटा में चेंजेस करने हैं, तो मुझे एडिटर को इनेबल करना पड़ेगा। बेसिकली आरजीआईएस को बताना पड़ेगा, ब्रो आई एम रेडी टू मेक सम चेंजेस, ठीक है। तो तुम अपना नोटबुक वगैरह लेके बैठ जाओ और मेरे चेंजेस को रिकॉर्ड कर लो,
ओके, तो ओके, एडिटर आई विल ट्राई दिस। एक्चुअली मैं ये एडिटर वाला ही ऑप्शन पे नहीं जा रहा था, तो राइट, इसलिए शायद मेरा वो एडिट नहीं हो पा रहा बिल्कुल, था। बिकॉज देन ArcGIS इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी चेंजेस, है ना, वो आपको अलाउ नहीं करेगा। दिस इज टू इंश्योर दैट यू डोंट मेस अप योर डेटा, है ना, अननेसेसरली आप उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो नॉर्मली यू वुड नॉट वांट द एडिटर टू बी इनेबल्ड। तो जैसे एक्सेल में भी देखो ये क्या दे रहा है मेरे को, इनेबल एडिटिंग का दे रहा है। अभी अभी मैं एडिट्स नहीं कर सकता इसमें कुछ, क्योंकि अभी एडिटिंग हम्म। इनेबल नहीं करी है मैंने, राइट। तो इट काइंड ऑफ इज द सेम थिंग, है ना, चाहे यहाँ एक्सेल में देखो एडिटिंग ब्लॉक्ड है अभी, अनलेस अनटिल आई टेल इट कि अच्छा ठीक है मुझे एडिटिंग करनी है। और ArcGIS में तो बेसिकली जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं या जनरली ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, वो इसी तरह का कुछ ना कुछ सिस्टम रहता है उसमें, कि आप जो चेंजेस करना चाहेंगे वो इंटेंशनल होने चाहिए, अनइंटेंशनल चेंजेस आर रिस्की, राइट। ओके, एंड वन थिंग मोर कि लाइक मैं स्नैपिंग ऑप्शन को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहता था। जस्ट इन QGIS आई फील कि स्नैपिंग में हम लोग ज्यादा कुछ कर पाते हैं, बट आर्क में हम लोग काफी रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे मैंने वो पहले में बोला ना कि वेक्टर के ऊपर एक और वेक्टर फाइल हम लोग बना नहीं सकते। ये इसका बेसिक पर्पस यही होता है करने का कि हम लोग उस पूरे फाइल का प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो वो बार बार वो गवर्नमेंट का ही वो प्रॉपर्टीज वगैरह में जाकर शो होता है अगर आप हम फाइल चाहे फोल्डर पे जाओगे डिलीट तो। कर सकते हैं, तमाम चीज़ें डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेटा डेटा आप चाहें तो उसको डिलीट कर दें। तो एक्चुअली देखो क्या है ना कि अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है अलग अलग तरह से या अलग अलग पर्पजेस के साथ बनाए गए हैं, ठीक है। तो जो QGIS है वो क्या कहते हैं, ओपन सोर्स है ना। जो लोगों को कन्वीनियंट लगता है और जो कन्वीनियंट होता है, इनफैक्ट जो यूजफुल लगता है होल कम्युनिटी को, वो फीचर्स उसमें दिए गए हैं, राइट। ArcGIS में भी इसका बेटर इंप्लीमेंटेशन ArcGIS Pro में, आई हैव नॉट ट्राइड इट, ठीक है। और क्या पता इसमें भी कोई हो, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं पड़ी। फॉर एग्जांपल जो प्रॉब्लम तुम्हें है वो मैं सॉल्व कर ले जा रहा हूँ इस तरह, राइट। तो अब मान लो मुझे कोई मेटा डेटा डिलीट करना है शेप फाइल में से, तो जो हमने बताया था ना एडिशनल फाइल्स होती हैं यहाँ पर, किसी भी शेप फाइल के साथ देयर आर सम एडिशनल फाइल्स, प्रोजेक्शन डीबी एफसीपीटी, ठीक है। तो इसमें किसी में साथ में आपका मेटा डेटा भी अवेलेबल होता है, तो आप उन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वो सब आपके हाथ में होता है, ओके। बट यूजुअली अगर आप मान लो आप कोई डेटा बना रहे हो, ठीक है, सरकार का डेटा यूज़ करा है, तो आप उसमें एडिशनल मेटा डेटा ऐड करना चाहेंगे। अच्छा हमने एडिट्स करें, बट ओरिजिनल जो ऑथर है उसकी भी इंफॉर्मेशन आप इंटैक्ट रखना चाहेंगे उस केस में, उसको डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपका जो डेटा सेट होगा उसकी एक्यूरेसी को सपोर्ट मिल जाता है कि अच्छा इट्स क्वाइट एक्यूरेट, है ना, अगर आप वो या राइट, ओके। और एक था कि लाइक हम लोग QGIS पे कोई वर्क कर रहे हैं तो उसको क्या हम लोग आर्क पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल, इंटरचेंजेबल है अक्सर चीज़ें। तो आप ओके। प्राइमरली जो प्रॉब्लम आएगी ना, आप ये देखें कि एक्सटेंशन जैसे .shp है, ओके। हम्म। तो वेक्टर डेटा के लिए आपके पास कई सारे अलग अलग फॉर्मेट्स होंगे। .shp जो है ये काफ़ी कॉमन है, तो ये इनका असल में खुद का ArcGIS का अपना था .shp, है ना, बट वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो गया एक तरह से काइंड ऑफ। जब भी आपको वेक्टर डेटा इधर उधर लेके जाना होता है तो आमतौर पे .shp फॉर्मेट में मिलेगा आपको। जब भी आप डेटा डाउनलोड कर रहे होते हैं इंटरनेट से तो अक्सर वो .shp फॉर्मेट में मिलेगा, राइट। बट इट इज़ नॉट द ओनली फॉर्मेट। और अलग अलग सॉफ्टवेयर बेसिकली अलग अलग फॉर्मेट्स को सपोर्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा को सपोर्ट करते हैं, कुछ कम को सपोर्ट करते हैं। यूजुअली ओपन सोर्स जो वो होंगे सॉफ्टवेयर्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन सपोर्ट करते हैं, ठीक है, अक्सर, ओके, थैंक यू। है ना, ओके। अबे सर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? भाई हम तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगा सुन के, और काफी अच्छा नॉलेज है आपको भाई, थैंक अरे यू। कभी कभी सर मोनोटोनस हो जाता है, ध्यान नहीं देते हैं, एकदम जोन में चले गए और ध्यान नहीं दे रहे, पढ़ा रहे हैं बस बोलते चले जाते हैं। आप तो भी खाना नहीं खाए होंगे अभी तक, खाना खा लीजिए, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा, हम पहले इस सब को प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद तब जी पूछेंगे आपसे जो दिक्कत आएगी।